एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून। हेलो मानस, हाय मोनिका, हेलो प्राची, हाय एवरीवन, हाय हेमंत, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? व्हाट्सअप। हेलो हेलो, हाय अमित, हाय सुयश, कैसे हो? हाय कौशल। हाँ जी बिल्कुल, ये स्ट्रीम वाईटी पे रहेगी। हाय रुचिर, हाय पीयूष, हाय साई, हेलो तनिष्क, हाय गरिमा। कितने बजे तक चलेगा? सो दिस विल बी ऑन टिल 2 to 5 and then 6 to 9. Am I audible? Am I audible? Yes, I hope I'm audible to all of you. Okay. Hi everyone. Again, good afternoon, all of you. So I was saying कि this session will go on till 2 to 5 and then 6 to 9. Okay. So this session is gonna go on till 2 to 5 and then 6 to 9 here. Okay. Hi, hello, hello, hello. Hi everyone. Okay. So in this, we are just gonna do a lot of practice of questions. ठीक है, बहुत सारे questions करेंगे. Some amazing, good questions here, right? Which will help you revise things, है ना? काफ़ी learning होगी आपकी. So कम आ रही है आवाज़? हाँ हाँ, एक ही stream पे है. Am I audible, loud and clear? No? Just give me a minute. No, I think I should be audible यार. अभी better है? Is it better now? Is it better now, guys? Hi Sejal. ठीक है, अभी better है? Yes, चलो. Okay, great, great, superb. So welcome everyone. सही है सब, है ना? ठीक है, चलो गुड टू गो. हाँ ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें फिर. सी क्वेश्चंस आर गोना बी कैट लेवल. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक है. वी नॉट गो टू वेरी एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस, है ना. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैट क्वेश्चंस टाइप, है ना. नॉट वेरी सिंपल ऑल्सो, बट हाँ कैट लेवल क्वेश्चंस. जैसे कैट में आते हैं ना, मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं, राइट. सो दैट इज़ वॉट वी आर गोना डू हियर. थोड़ा लर्निंग होगा, थोड़ा रिविजन भी होगा, है ना. एंड आई डू कपल ऑफ मोर सेशंस. तो जितने भी कंसेप्ट आज रह जाएंगे वो हम आगे आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, ठीक है ना. बट वी विल कवर एवरीथिंग, ऑल द सेशंस विल बी कवर्ड, है ना. कैट लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, ऑल कैट लेवल क्वेश्चंस टुडे, राइट. चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल ऑफ यू. ठीक है, सब लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को एंड विल गिव मी द आंसर्स एंड देन वी विल डिस्कस. चलो, एंड ऑल ऑफ यू विल कीप अ ट्रैक, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन हो पाए किससे, राइट. ऑल ऑफ यू विल कीप अ ट्रैक ऑफ दैट. कितनी देर का होगा? 6 आवर्स की मैराथन है, ठीक है. एंड 2 to 5, देन अ ब्रेक ऑफ 1 आवर एंड देन 6 to 9. ठीक है ना. वेलकम चाहत. होपफुली यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम टुडे सेशन, ठीक है. प्लीज ट्राई दिस ऑल ऑफ यू. हाय अमनप्रीत, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. वेलकम टू द क्लास. So the very first question is one of my favorite topics, that is TSD. So the first question is on TSD itself. देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं. हाय तारंग, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून यार. व्लॉग्स करण के, क्या बात है. गुड आफ्टरनून. हाय पर्व, हेलो हेलो, वेलकम एवरीवन. हाँ जी, सर का फेवरेट, यस. TSD रिवीजन मांग रहा है.
चलो आज रिवाइज हो जाएगा काफ़ी टीएसडी तुम्हारा. ऐशानी सिंग्स बी. ओके, लेट एवरीबडी सॉल्व, है ना, सबको सॉल्व करने दो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, एंड सब लोग जेन्युइनली सॉल्व करना. ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व इट जेन्युइनली. हाय उत्कर्ष, गुड आफ्टरनून यार, कैसे हो, क्या हाल चाल. सब लोग खुद से सॉल्व करेंगे. ठीक है, कोई भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सो टेक योर टाइम, सॉल्व अच्छे से, है ना. एंड कीप अ ट्रैक ऑफ एक्यूरेसी एज वेल. ठीक है, एक्यूरेसी का भी ट्रैक रखेंगे सब लोग. हेलो पुनीत, हाउ आर यू. कोई बात नहीं, हो जाएगा ये, है ना. थिंग्स विल गेट रिवाइज टुडे. नहीं पर दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सर एग्जाम डेज ट्रैक ज़्यादा आने के चांसेस हैं या बोर्ड्स. कोई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता यार प्रतीक कि क्या ज़्यादा आएगा, है ना. तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. ठीक है, नो बडी कैन प्रिडिक्ट. ओके, सो समबडी इज सेइंग 3. आई हैव गॉट 2 आंसर्स टिल नाउ. वन इज 7, वन इज 3. एनीबडी एल्स हु कैन कम अप विद द आंसर. 7 आया फॉर प्रभु एज वेल. ओके, ग्रेट, ऑसम. बी 7 फॉर पुनीत एज वेल. ओके, बाबू राव इज ऑल्सो गेटिंग 7. अच्छा, हेरा फेरी तो नहीं करी है. आई होप कोई हेरा फेरी नहीं करी बाबू राव ने 7 लाने में. बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग अटेंड कर सकते हैं. ओके, सो नाउ एवरीबडी इज गेटिंग द आंसर एज 7. गुड गुड गुड, नाइस. ठीक है, चलो. ओके, डिस्कस करें फिर. शैल वी डिस्कस द फर्स्ट वन हियर. शैल वी डिस्कस द फर्स्ट वन हियर. हाय आर्यन, कैसे हो, क्या हाल चाल. यस, ऑल ऑफ यू अप फॉर द डिस्कशन. यस. ओके, चलो, लेट्स सी. Now it says here 3 boys A, B, and C start running at a constant speed from the same point P along the circumference of a circular track. ठीक है, सो यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है, ऑलराइट, और यहाँ पे 3 boys हैं that are running along this circular track, right? That is A, B, and C, right? Now the speeds of A, B, C are in the ratio 5 is to 1 is to 1. So their speeds are in the ratio 5 is to 1 is to 1. I hope I'm audible यार, कोई low voice तो नहीं आ रही है ना. The mic is very close यार, I should be audible. Yes, ठीक है. Now A and B run clockwise. So A and B are running in the clockwise direction. So I can say that A and B are going in the clockwise direction, right? And C runs in the anti-clockwise direction. So C is running in the anti-clockwise direction, right? Now it says here further, each time A meets B or C on the track, he gives them a card. Okay. So each time A meets B or C on the track, he is giving them a card. What is the difference in the number of cards received by B and C if A distributes 33 cards in total? Hi Neelu, good afternoon, right? So अब यहाँ पे समझो guys, यहाँ पे कि we had learned a concept, एक quick revision हो जाए concept का पहले, ठीक है, that if two people are traveling in opposite directions, if two people are traveling in opposite directions, then the number of meeting points, can anybody tell me कितने होते हैं? What is the number of meeting points here? If two people are traveling in opposite directions, what is the number of meeting points for them? Can I say S1 plus S2, right? If the ratio of the speed is S1 is to S2, then the number of meeting point is always S1 plus S2, right? And if two people are traveling in same direction, if they're traveling in same direction, then the number of meeting points is S1 minus S2. Yes, all of you agree. So we take a difference when the people are traveling the same direction, and when they're traveling in opposite direction, we take the summation of them, right? So can I say here that A and B, the ratio of their speed is 5 is to 1, right? So after every completion of one round, how many times will they meet? A and B, they'll meet how many times? In every one round. In every round, A and B will meet 6 times. Yes. And in every one round, A and C will meet exactly 5 minus 1, that is 4 times. All of you agree with me? Is everybody good till here? Yes. Reading the messages is a problem. Yes. Okay. So can I say A will give 6 cards
to B every time he meets him, right? And A will give C 4 cards every time he meets him, right? So after one round, okay, after one round, right? Acha, A and C are opposite. Okay, okay, no worries, no worries. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. A and B 4 times and this is 6 times. So 4 cards and 6 cards, right? Now, can I say after completion of one round, ठीक है, एक round complete होने के बाद A ने 10 cards distribute कर दिए, right? After completion of one rounds, A has distributed exactly 10 cards. All of you agree with me? सब लोग एग्री करते हैं इस बात से, बताओ, है ना? ए ने एक राउंड कंप्लीट करने के बाद 10 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जिसमें से 4 कार्ड बी को गए और 6 कार्ड सी को गए, है ना? ठीक है. तो ऐसे 30 कार्ड्स तक, ठीक है, ऐसे 30 कार्ड्स तक, कैन आई से ए वुड हैव रिसीव्ड आउट ऑफ 30 कार्ड्स, अगर मान लो 30 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते तो बी को कितने कार्ड्स मिले होते? अगर ए ने सिर्फ 30 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए होते तो कैन से बी को 12 कार्ड्स मिले होते, है ना? और सी को 18 कार्ड्स मिल गए होते. ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? यस? यस और नो? सब लोग एग्री करते हैं इस बात से, ठीक है? अगर 30 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए होते ए ने तो बी को 12 मिलते और सी को 18 मिलते, राइट? अभी भी 3 कार्ड और बच रहे हैं, है ना? 3 more cards, राइट? 3 more cards टू गो, है ना? अब जब भी ए के जो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स हैं, है ना, ए हमेशा सी को ज्यादा कार्ड देगा और बी को कम देगा. जब भी एक राउंड कंप्लीट होता है या जब भी एक राउंड स्टार्ट होगा, तो ए जो है वो बी को कम कार्ड देगा और सी को ज्यादा कार्ड देगा. क्यों? क्योंकि ए और सी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. यस और नो? सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? तो जो 3 कार्ड बच रहे हैं यहाँ पे, उसमें से एक कार्ड मेरा बी को जाएगा और 2 कार्ड मेरा सी को जाएगा. ये मैं कंक्लूड कर सकता हूँ. कैन आई कंक्लूड दिस डायरेक्टली? है ना? डायरेक्टली मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूँ. तो आई कैन से सी के पास 2 कार्ड और आ गए, तो सी हैज गॉट 20 कार्ड्स एंड बी हैज गॉट एग्जैक्टली 13 कार्ड्स. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कार्ड्स? Okay, Monica. Right. I'll take care of that. All right. So, what is the difference between the number of cards here? Can I say the difference is of 7 here? Right. So, the answer is option number B, that is 7. And a lot of you got this correct. Quickly tell me how many people got this correct? How many of you got this as the right answer? Monica, do you want me to repeat any of the part which I, just uh, said in Hindi something? If you want to repeat. 3 cards left. Okay. So, Monica, 3 cards are left, right? And we know that C will always get more cards than B. Why? Because we see here also, right? In every 5 cards, if you look at the distribution of ratio of A to B to C cards here, that is 2:3, right? When B gets 4 cards, C gets 3 cards. So can I say C always gets more cards than B, right? So when there are 3 cards left, I can say C should get more cards than B. So the distribution possible is 2 and 1, right? And if you want, you can also mark the meeting points and then calculate as well, right? Okay, you can also mark the meeting points. Okay, Pratmesh, that is not gonna happen. Okay, let's understand here, Pratmesh. Okay, so Pratmesh, you agree with me that A and B will meet at 4 different meeting points, right? Okay, A and B are gonna meet at 4 distinct meeting points. Yes, all of you agree? Please tell me. You can always count. Okay, I'll tell you the way to count, right? So let's say there, I'll divide this circle into 10 meeting points here. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and let's say 10. Okay, now guys, observe carefully here, please observe carefully. When A travels 5 part, B will travel 1 part. Yes or no? When A travels 5 part, B will travel 1 part, right? Now consider it as 6 distinct meeting points for A and B, right? So A and B 6 distinct meeting points is gonna be, I can say 1, 2, 3, 4, 5, and I need to divide it into 6 equal lengths, okay? So I need to divide it into 1/6 part, right? So see, this is not important though, but again, you should, shall I take a fresh page here? Let me just take a fresh page here and then I'll explain.
Now A and B have to meet at four distinct meeting points. All of you agree? Yeah, I don't have a black slide here extra. I cannot erase this part. Okay. So I'll say I'll divide this into four parts. Okay. One, two, three, and four. Right. So when A travels five, right? Listen carefully, guys. Please listen very carefully. When A travels five parts, B travels one part. Yes or no? Right. So A five parts. So one, two, three, four, and five. So A's fifth part is gonna be at this point. Yes or no? And B's one part is gonna be at this point. Yes, all of you agree with me? Is everybody comfortable? A and B, they have four distinct meeting points. Yes, so that is gonna be the case, right? Again, B will travel one more part, and in the meanwhile, A will travel five parts. So one, two, three, four, and five. So this is their second meeting point, right? For A and B, right? Similarly, one, two, three, four, and five. So this will be the third meeting point, and this is the fourth meeting point, right? These are the fourth meeting point here, isn't it? Now, similarly, when you do for A and C, so A and C are now moving opposite directions, right? So just take two extra. Now, just take two extra points here, okay? Let's say fifth and sixth. Let's say I've taken two extra points, right? Now, it was given that when C covers 1, right? When C covers 1, A will cover 5, right? And C is traveling in opposite direction. So when C reaches here, that is one part for C, right? A is gonna cover 5 parts, that is 1, 2, 3, 4, and 5. So A will reach here, right? In the meanwhile, B has reached here. So A has already given C one card here, and B it has not met yet. Why? Because A is the faster person, है ना? A is the faster person, so A is gonna move ahead of B, right? And A will meet C for the first time, right? A will meet C first, then B. Why? Because A and C are moving in opposite direction, right? So A will give C one card here, right? Then A will meet B. A will give the second card to B here, right? After one round, yes, after one round, A is gonna meet B here, right? And A will get the second card. And while it is traveling back, C would again reach here. And this is A meeting C here for the third time. And A gives the third card here. So when only three cards are left, C will get two cards and B will get exactly one card. Is everybody able to follow this? Is everybody able to understand that how the distribution is gonna happen? But this is again not important because Pratmesh asked me, so I'm telling you this, right? Okay, but this is not important. This process is not important at all. You can straight away observe here that C is getting more cards than B, so the distribution has to be 2 and 1. Yes, Aman, you can do that. L by 6, L by 2, you can do that definitely. Yes, that is all approach that I've taught in classes as well. है ना? ठीक है? चलो. Shall I proceed ahead to the next question? हाँ, don't do that, Garima. Okay. चलो, shall I proceed ahead to the next one, guys? Everybody. Yes, yes, whatever the number. If five cards were left, then straight away you can give C three cards and B two cards. Because we know that the five cards are always divided in the ratio of 2:3. Okay? Yes. Chalo, let's move ahead to the second one here. Now, please try this. Now, all these separate cases, if two cards were left, if three were left, if six were left, you guys can try, you guys can try working on your own, right? Because if I continue with one question only, then how will I proceed further? Isn't it? Okay, so you guys can try that on your own and let me also know that what the answers you guys were getting. If there's any doubt, you guys can reach out to me. Okay, chalo, please try this now. Now this is a pretty easy one. You guys have done a lot of question of this variety here. So everybody should be able to solve this here. And there's gonna be huge learning here. There's gonna be huge amount of learning, guys. ठीक है, आप लोग काफ़ी कुछ लर्न करोगे यहाँ पे, काफ़ी कुछ आपका रिवाइज होगा. A lot of learning to take from this marathon here. Do not worry about that, the learning part.
right? Your 6 hours will be worth of it. Okay, Aryan, we'll see. Let others solve also, Aryan. बाकी लोग को सॉल्व करने टाइम दो. And all of you keep a track of your accuracy. How many you guys are getting correct, how many incorrect. Keep a track of that. I want all of you to get this correct. This is a simple, straightforward question. We guys have done a lot of questions of this variety, and they have been asked in CAT as well. So this question should give you some confidence here. Done. Give me the answers. Angela is also getting B. Everybody is getting B as the answer. How many of you are not getting B as the answer? Or how many of you are not able to solve yet? Still need more time to solve. Around 30-35 questions, Angela. Around 30 questions. Prachi, you couldn't solve. More time. कोई नहीं, I'll come with a TSD workshop, okay? I'll come with only a TSD workshop someday. I mean, in coming next 10-20 days, I'll come with a TSD workshop. And in that, I'll maybe revise TSD for you guys. Okay? We'll do a revision as well. Shani is also saying B. RN is saying 6 4 by 25. Okay. Yes, I'll do that. Definitely. Chalo. Okay, let's discuss. Shall we discuss here? I'll plan in the coming days. Okay? I'll plan this workshop. क्लास में क्या है, क्या बात है, चलो ग्रेट. ठीक है, लेट्स सी. It says working alone, A, B, and C can complete a piece of work in 8, 12, and 30 days, respectively. Okay. So A does a work in 8 days, B does it in 12 days, and C does it in 30 days. Now, what is the total work here? I'll plan, Manju, है ना? I'll have to plan the workshops. What is the total work here, guys? Can I say the total work is gonna be 120 units? Yes. So on that basis, I can say A does how many units per day? I can say 1 and 15 units per day. Yes. Similarly, B does 10 units per day and C does 4 units per day, right? All right. Now it says here at the most only two people can work on each day. Okay. So only two people are allowed to work on each day, and nobody works for more than 2 consecutive days, right? So nobody can work for more than 2 consecutive days. That means the maximum a person can work is for 2 consecutive days. What is the minimum number of days that will take to finish the work? Now, if you want to finish the work in minimum number of days, so can I say you should start off with A and B? Yes or no? You should start off with A and B, right? So if A and B work on the first day, how many units of work will be done? How many units of work will be done? Can I say exactly 25 units? Yes. After that, let's say A and C works, right? Let's say 14 units of work is done, right? And then B and C works, right? Why? Because now A cannot work. A has already worked for 2 consecutive days. So now A cannot work. Day 1, day 2, and day 3. On day 3, how much unit of work is done? I can say exactly 14 minutes. Sorry, my bad. This was 19 here and this is 14 here. Yes, comfortable? Is everybody comfortable till here?
Please confirm, guys. Is everybody good till here? Yes? Okay. Now, in 3 days, in a span of 3 days, how much work is done? Can I say the total work done here in a span of 3 days is nothing but I can say 19 plus 14 is 33. 33 plus 5 is 38, 48, 58. So 58 units of work is done. Yes? Right? So in next 3 days also 58 unit work will be done. Yes? In next 3 days also 58 unit work will be done, right? So 6 days and 116 unit work is done. Now how much work is remaining? How much work is remaining now? Can I say only 4 units of work is remaining, right? Now after this cycle ends, right, day 4, day 5 and day 6, so can I say on day 7 A and B will again work, right? Now, if A and B works for the entire day, they are gonna do 25 units of work. But I want them only to do 4 units of work because only 4 units is left. So if they are doing 4 units of work, then they'll take how many days? I can say 4 by 25, right? Only 4 by 25 fraction here, isn't it? So 6 complete days and 4 by 25 extra day. So the answer for this question is option number B here. Could everybody follow? And you guys have done a lot of questions of the similar variety. Okay? That's silly mistake. Acha. Now you shouldn't do silly mistakes. Anybody who couldn't get this correct? Anyone here who couldn't get this correct? Vignesh. Okay. Diya as well. Hemant as well. Amisha as well. Okay? So see, guys, now these are CAT level questions, okay? And if you're getting this incorrect now, then that means you need to revisit your class questions. Okay? These questions are pure CAT level. है ना? Okay, these questions are pure CAT level. Okay, chalo, let's move ahead to the next one now. Please try to solve this. Hmm. Speed is low. ठीक है. Sound कम है. I hope यार I'm audible. Saurav, you have to finish the work as soon as possible, है ना? तो if B works on day 2, the work is not going till day 8 ना. ठीक है. तो वहां पे आप देखना पड़ेगा, आप सॉल्व करके देखो एक बार, है ना? बिकॉज द वर्क इज नॉट गोइंग टिल डे 8 तो चल जाएगा. बट if the work was going till day 8, then it would have been a problem. Shriram, you have to finish the work in minimum days, minimum number of days, right? हाँ प्रभु. Easy था ना? Now you guys find CAT level questions easy because you have done good quality of questions. So now you find these things pretty easy, huh? Okay, how many of you are getting B as the answer? Mock के side effects. Good, good. Okay, nice. B. Okay, a lot of you are getting B as the answer. Cool, cool, cool. Okay, anybody who needs still time to solve? Anyone who still needs time to solve here? Shriram, I told you, no, that you have to finish it in minimum number of days, so you'll start with the maximum people. So 1 minute. Acha.
Deep, I'll check it later. ठीक है. Hi Tushar, good afternoon. How are you? All right. So I hope that everybody is getting B as the answer. Yes. Shall we discuss here? Shall we discuss? All right. So guys, shall we discuss? Please confirm. I think I'm not audible to Shriram. I have answered his query 10 times. I hope. I think I'm not audible to him. Chalo, theek hai. Okay, from a solution that has milk and water in the ratio 5 is to 3. Okay, so milk and water in the ratio 5 is to 3. So let's say the solution is of 800 liters. I can assume the quantity. Okay, in that milk is 500 and water is 300. Okay, now X percent is removed and replaced with water, right? Now X percent is removed and replaced with water. So X percent is removed. So what is X percent of 800? Can I say 8X is removed? Right, and 8x has been removed and replaced with water, right? So अगर 8x remove हुआ है, right, so can I say this 8x, it is gonna go in the same ratio, that is milk is gonna go out 5x and water is gonna go out as 3x? Yes or no? All of you agree with me? Isn't it? When we remove something, when there's a mixture removed, so it goes out in the same ratio as the quantity present in the mixture. Yes, all of you agree. So can I say now the milk remaining is 500 minus 5x, right? And the question says here the concentration of the milk in the resulting solution lies between 30% and 50%, right? So what is the concentration of the milk here? Can I say 500 minus 5x upon 800? Because total solution is still 800. All of you agree? Isn't it? Why? Because whatever quantity was removed, the same has been added, right? So total quantities is still 800. And in terms of percentage, the concentration is, can I say 0 and 0 is cancelled. So 500 minus 5x by 8, right? And this lies in the range of 30 to 50%, isn't it? So when it says between, right? So you'll not take equal to. So this has to be greater than 30 and it has to be less than 50. 8x has been removed. Okay, supernova, what is your name here, right? So 8x has been removed, है ना? So when 8x is removed, so in that milk and water, it will be removed in the ratio of 5 is to 3, isn't it? Because both are present. No, not only milk is removed. It says X percent is removed and replaced with water. So when X percent is removed, the mixture has been removed. So 5x milk will go out and 3x water will go out, right? So milk was initially 500, 5x has been removed. So the remaining milk is 500 minus 5x. Still the total solution is 800 liter. So concentration of milk is 500 minus 5x upon 800. In terms of percentage, multiply by 100. Comfortable? Could you follow here? Yes. So from here, what do I get here? So this is cross multiply this. So 240 is lying in the range of 500 minus 5x and 400, right? So from here, what do I get? This will be, I think, 260 with a negative sign. And here we will get a minus 100, right? Now, what is the range of 5x here? What is the range of 5x? If I multiply with a negative sign, then the sign of the inequality will reverse here. Yes, all of you agree, isn't it? So x will lie in the range of 22. This is how much? 52. And that is my required answer. Could everybody follow? Yes, all of you please respond. Is everybody able to follow this? Same thing I have used, Angela. Same removal replacement I have used. I have not just used a multiplying factor here. Okay. Abhishek will do that type. Okay. We'll do that type. They see a question can be done with multiple methods, right? But the point is that I have to take so many questions. Okay. So now at this point of time, I'll teach you one method. Wherever I feel that I should teach multiple methods, I'll teach you. You know? How you can do that. Okay, you do it using milk percentage directly as well. That is also a right way to do it. Okay.
Chalo, let's move ahead to the next one here. Now, please try this. All of you should try to solve this here. इसमें तो ऐसे ही करोगे ना, ठीक है? This is the decent way to solve it ना. I'll tell you shortcuts जहाँ पे लगाने चाहिए, ठीक है ना? I'll tell you shortcuts. See, it's a good idea to use shortcuts when you have the exact values, है ना? Multiplying factor works really well अगर आपको exact quantity पता हो कि कितना mixture है, right? ठीक है? Don't go for shortcuts here when things are in terms of x or something. Try to use the proper approach, ठीक है ना? Now, please try to solve this, all of you. Why didn't you solve with water? Because the percentage of milk has been given, na? So why would you solve it with water? Tell me. You should focus on milk. The question gives you the percentage, the inequality for milk, right? So you will work on milk. ठीक है? चलो, please try this now. हाँ जी सुजाता, पूछा भी मिल्क है, राइट? मेक सेंस. वील सी आर्यन, देखते हैं if that is the right answer. Okay. Couple of you are getting A as the answer. We'll see. Don't demotivate others, guys. Do not demotivate others. Don't be that quick in solving. That other will feel demoralized. This is not a first round question, yaar, Aryan. This is a round two question. Why? Because it's a lengthy question. You know, it's a lot to read. First round question is always one liner questions. The moment you read the question, look at the question, you should know what the question is. Those category of questions are one round questions. Let others solve, है ना? Let everybody solve. You have to think on your own. You have to think on your own. Think on your own and then solve. Ayush is also getting A as the answer. Okay. Karan is also getting 5. Anybody else? Done. Answers? Nice, yaar. You guys are able to solve these questions, and
You tell me that you guys are not able to make questions, है ना? SICI, I'll take it up in the next marathon. In the next marathon, I'll take up SICI questions. ठीक है? चलो, let's see here. Mock में timer. अच्छा. Around 30 questions, Puneet. We'll do around 30 questions here today. Alright, Vijay, Saral, and Himanshu visited a shop to buy a certain article. Each one of them bought at least 1 unit of the article. Okay. The shopkeeper gave a discount of 20% to Vijay. Okay. So 20% to Vijay, right? Right? Two successive discount of 20 and 25% to Saral. Now, I'll say, let's say Vijay has bought A articles. Okay. Saral has bought B unit of article and Himanshu has bought C unit of article. Right? Now, Vijay has got a discount of 20%. Okay. ठीक है. Saral has got two successive discount of 20%, 25%, right? Now, 20% and 25% successive discount is equivalent to, can I say, 20 plus 25 plus 20 into 25 by 100? Yes or no? Equivalent percentage discount I can get from here. Can you tell me how much will this come out to be? Or I can, instead of using this, I can use a multiplying factor. I hope you guys are much more comfortable with multiplying factor, right? So I can just use the multiplying factor here. 4 by 5 into 3 by 4. Yes, 20% discount means 4 by 5 multiplying factor, right? 25% discount means 3 by 4. So overall the multiplying factor is 3 by 5. So 3 by 5 means there's a discount of 2 and 5. That means 40% discount. Yes, all of you are okay with this, right? So Saral is getting an overall 40% discount, right? And three successive discount of 20%, 25%, and 40% to Himanshu. Now 20%, 25%, and 40% to Himanshu. So I can say 20% means 4 by 5 discount. Yes. है पुष्पित, मुझे तो नहीं पता था कि माइनस से होता है. ऐसा है क्या? ठीक है. 3 by 4 into 40%. 40% discount will be how much, guys? What is 40% in terms of fraction? 2 by 5. So discount means 3 by 5 here, right? So how much is this coming out to be? Equivalent percentage discount 64. Sure. Is everybody getting 64%? आशीष, आप मुझसे क्लास के बाद कनेक्ट करो, ठीक है? यस, ओके, चलो फाइन. सो 9/25, सो 1/25. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. सी, 9/25, so there's a discount of 16. Siva, you have not learned multiplying factor funda. 25, 9/25 means there's a discount of 16 in 25. 16/25 is how much? 1/25 is 4%. So 16/25 will be 16 into 4%, that is 64%. Yes? Comfortable? Could everybody follow? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. I'll take LRDA marathon also. Yes? Okay, चलो. This is very basic, यार. अब मंजू, I cannot go to this basic, है ना? In a marathon, I cannot go to this basic, right? ये आपको आना चाहिए. This is something that you should be aware of, that how this 9/25 is coming, how you're getting 3/4, right? This is the very first class of percentage. Okay, चलो. Let's move ahead now. ठीक है? After selling X units of the article, he calculated that he had given an overall discount of 50%, right? So 20% discount on this, 40% discount on this, and 60% discount on this results in an overall 50% discount. So can I say that 20% of A plus 40% of B plus 64% of C is same as saying 50% of A plus B plus C? Can I conclude this equation here? Tell me. All of you should respond. Can I conclude this equation here? Please tell me, everybody. Yes? Okay.
So on solving this, what is the final equation that we are getting here? On solving this, what is the final equation that we are getting here? I'm gonna erase this working here now. This is not required. Anybody can tell me the final equation that I'm getting here on solving this? Simplify this and tell me the final equation here. 100 is gone throughout. Yes, 100 is gone throughout, right? So 20, 80, is any number divides all these numbers? Yes, 4 5s are 20, 10s are, and 16, right? But this is not divisible by 4. Sorry, my bad. Any number that divides all the number, I can divide it by 10 basically. 2, 20, 32, and 25. So from here, what is the equation coming out to be? Can anyone solve and tell me? 7c is equal to 10a plus 5b. Sure, is that the equation? 25a minus 10a. Okay, that is gonna give me a 15a, right? And 25b minus 20b is gonna give me a 5b, and 32c minus 25c is gonna give me a 7c. Is everybody okay with this? Yes, this is the equation that I'm getting here. All of you agree? 7c is equal to 15a plus 15b. Please come tell me, guys. Is everybody okay with this? Okay. After this, a lot of people could not solve. You know? How many of you couldn't solve after this? How many of you couldn't solve after this? After this step, how many were not able to solve? A lot of you. Okay. Now, if you observe here, I have told you that whenever you come across such a thing now, see, the right hand side is a multiple of 5. Yes or no? The right hand side is a multiple of 5. So if the right hand side is a multiple of 5, so the left hand side should also be a multiple of 5 here. Yes or no? Why? Because if there's a equal to sign in between, so if the right hand side is a multiple of 5, the left hand side should also be a multiple of 5, right? Now, for this left hand side to be a multiple of 5, can I say C should be a multiple of 5 here? Yes or no? C should be a multiple of 5 here. So if I take the minimum value of C, if C is equal to 5, then this is 35 here, right? Now, if this is 35, then if A is equal to 1, so 15 here. So can I say B will be equal to 4? Yes or no? All of you agree with me? If C is 5, then A can be 1, B can be 4, or A can be 2, right? So 15 twos are 30, and B can be 1. Yes. Is that possible, all of you? Okay. Now, after that, C can be 10 as well. If C is 10, I can take A as 1, right? Now, if A is 1, so 70 I want, right? So 15 is already here, right? 15 is already here, so I need a 55 more, isn't it? So can I say the value of B will be 11 in that case? 5 into 11 is 55, plus 15 is 70, right? Otherwise, I can take A as 2. Now, if A is 2, so that means 15 into 2 is 30. I need 40 more, so B will be equal to 8. Yes, so that is one of the possible combinations, right? Then again, A can be 3 as well. So 15 threes are 45. 15 threes is 45, and I need how much more? How much more do I need? 45, 550, 25 more. So B can be 5 here, right? Okay. After that, what else? Can I take A as 4? Can I take A as 4 here? If A is 4, 15 fours are 60. Can I take A as 4, guys? Yes. So if A is 4, then B is 2 here, right? But remember, guys, that X lies in the range of 8 to 20, right? We have a filtering criteria here, right? That X lies in the range of 8 to 20. And what is X? X is nothing but, can I say A plus B plus C? Yes or no? X lies in the range of 8 to 20, and X is nothing but A plus B plus C, right? So can I take the first case here? Can I take the first case here? Please tell me. Can I take this first case here? No, right? So this case is ruled out. 8 plus 2 is 10. 10 plus 10 is 20. 20, this case is possible. This case is also possible. This case is also possible. This one is also possible. This one is also possible. So we are getting how many cases?
How many cases are possible here? I can say exactly 5 possibilities. So the answer for this question is option number A, that is 5. Comfortable, everybody. So this is a layer 2 question. It has an application of linear equation along with your profit loss, along with your percentage, right? So this is a 2 layer question with 2 topics involved. भव्य मैंने किया था अभी यार, I solved it है ना, ठीक है, I solved it अभी, way back, अभी थोड़ी देर पहले I solved it, right? Okay, so those who couldn't solve this, is everybody okay with this? C can't be more than 10. Obviously, C can't be more than 10. If your C itself is more than 10, then this will cross 20 now. This will cross 20, our upper limit. Yes or no? If you take C as 15, let's say. C as 15. Now, what is 15 sevens are? 105, right? So to make it as 105, you will need higher values of A and B. So that will cross your upper limit of 20. Isn't it? So C can't be more than 10 here. This is moderate to difficult. Yeah, this is a good question. You guys were able to solve, that is why it's okay. But this is a very good question. That's a good thing. Those of you who could solve. Okay, how many of you are sitting at a 4 on 4 accuracy at the moment? Two on four, 3 on 4. Okay. Anybody else? 3 on 4. Anybody with 4 on 4? Only Aryan here. Prabhu and Aryan. Okay. Good, good, nice. Chalo. Let's move ahead to the next one now. Please, all of you will try to solve the next question here now. Please try to solve this. Manish, this is not a PYQ. I have seen this question in one of the PYQs. This is not a PYQ. Manish, I explained no, Baba. देखो 7C is equal to 15A plus 5B. Yes or no? Okay. So if left hand side is a multiple of 5, this right hand side, then left hand side should also be a multiple of 5. Isn't it? So if this number has to be a multiple of 5, so it is only possible when C itself is a multiple of 5, right? Now you cannot take C as 0. Why? Because it was clearly mentioned that each one of them bought at least 1 unit of the article. Isn't it? So you have to start with 5. When C is 5, then 7 5 is 35, right? So 35. Now 35 can be made when A is 1, 15 into 1, and B is 4, right? Similarly, when A is 2, B is 1. You can make different cases, right? ठीक है ना? I hope everybody's clear on this. ठीक है? चलो. Now please try this here. I'll take algebra as well. Honey and milk is something that you have to deal with here. Water is just for the confusion here, right? Water is just for the confusion here. सक्सेसिव से निकाल लो, वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रख दो भव्य. क्या प्रॉब्लम है सक्सेसिव से निकालने में बताओ? -20, -25. -40. ठीक है. Got it, भव्य? Now if you guys are able to solve it so quickly,
Aryan and Ria. This is very next to impossible. This is next to impossible if you guys are solving it so quickly. हैकर हो क्या तुम लोग? Just give me a minute, guys. Just give me a minute. इनसे सर अप्रोच पूछो, आंसर नहीं. नहीं यार, दिस इज नॉट अ इजी वन. इतना इजी भी नहीं है ये. आर्यन इस बार 100% लेके आएगा. Those who did this with collinear property, they're gonna definitely score 100 percentile this year. और ये पक्का ये सोचने वाली चीज़ नहीं है. ये तो एआई से ही हो सकता है बस. हाँ, तो ये एआई से किया गया है. ये चैट जीपीटी का सोल्यूशन है. ये तो पक्का चैट जीपीटी किया हुआ है. कोलिनियर कोई सोच ही नहीं सकता. इतना मेरा 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 9 साल का. है ना. इतने टाइम में आज तक कोई कोलिनियरिटी नहीं सोच पाया. ठीक है. अरे ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही मैं 8 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ यार. ठीक है. हाँ. जो कोलिनियरिटी इसमें सोच लिया जिसने, तो वो कोलिनियरिटी सोच नहीं पाएगा कोई. ठीक है. आ ही नहीं सकता यार. ये वाला क्वेश्चन ऐसा देखा हुआ है. अच्छा. चलो ठीक है, देखते हैं. ऑल ऑफ यू डन? शैल वी डिस्कस हियर? शैल वी डिस्कस गाइस? हाँ, सही चीज़ है. डेफिनेटली मैं सिखाता कोलिनियरिटी से. ठीक है. बट चलो, couldn't do this. अच्छा ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू डिफरेंट सोल्यूशंस ऑफ हनी मिल्क एंड वाटर मिक्स्ड विद ईच अदर. ठीक है. 3 times in varying proportions. ओके. ठीक है. तो 3 times varying proportion में इसको मिक्स किया जा रहा है. द कंसनट्रेशन ऑफ हनी एंड मिल्क इन द 3 रिजल्टिंग सोल्यूशंस आर फाउंड टू बी 10, 16, 12, 12 एंड 16x. ठीक है. चलो. सो आई से हियर कि हनी एंड मिल्क in the first solution is, let's say, in the ratio A is to B. Honey and milk in the second solution is in the ratio C is to D. ठीक है. अब लेट्स से कि यहाँ पे जब मिक्स किया, ठीक है, व्हेन आई मिक्स इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम गेटिंग हनी एंड मिल्क in the ratio 10 is to 16. All of you agree with me? Yes? All of you agree? When I'm mixing it in some proportion here, I'm getting honey and milk in the ratio 10 is to 16. I'm gonna mix this in some proportion. Just give me a minute, guys. My battery is low. Yes? So, can I say, and the other time that I'm mixing it, so can I say whatever proportion I'm mixing this in, right? Okay. Now, just understand here. I hope you guys have done this number line method.
So on one side you have A comma B, right? On the other side you have C comma D, right? And in between you have 10 comma 16, right? ठीक है ना? मैं फुल आप फुल चेंज हो क्यों भाई? What happened? Full change as in? ठीक है. 10 comma 16, right? Okay. Now, all right, please listen carefully guys now. ठीक है. So distance here, right? If you look at this and this, okay, if you look at this and this, so the distance is 10 minus A, right? And if you look at this and this, so this distance is C minus 10. Assuming that, let's say C is greater than A. ठीक है. So can I say the ratio is gonna be nothing but 10 minus A upon C minus 10, right? This ratio should be same as 16 minus B upon D minus 16. All of you agree with me? Yes or no? All of you please tell me. Is everybody okay with this? This equation is comfortable with all of you? Kindly respond guys. Yes? Okay. So can you all just solve this and tell me what will this come out to be? ठीक है, इसको simplify करते हैं. Let's multiply this and solve this and see how much this comes out to be. So I'll get here nothing but as, this is the traditional way of solving. So 10D, okay. What do you want me to repeat? I hope you guys have done seesaw method here. You guys have done seesaw method. This distance comes on this side. This one comes on this side. So these are the ratio of weights. Has everybody done seesaw method? Yes. So this is it. वही किया ना मैंने. So 10 minus A upon C minus 10 will be same as 16 minus B upon D minus 16. Yes, all of you agree? याद तो नहीं आ रहा है. ठीक है, कैसे भी कर लो, इट डजेंट मैटर, है ना. तो अब यहां से क्या आएगा? ऑलराइट, तो यहां से क्या आएगा? लेट्स मल्टीप्लाई एंड चेक. 10D माइनस AD, ठीक है. अरे इट्स द सेम थिंग यार, वेदर यू यूज सीसॉ, वेदर यू स्पाइडर वेब, इट्स ऑल द सेम, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है. माइनस AD, देन माइनस 160, एंड आई कैन से प्लस 16 है. येस और नो? दिस एंड दिस क्रॉस मल्टीप्लाइड, ठीक है. दिस एंड दिस क्रॉस मल्टीप्लाइड, यू गेट दिस आंसर. when you multiply this and this, so you'll get nothing but 16C minus 160 क्या नहीं समझ में आ रहा है गरिमा, बताओ. माइनस CB and plus 10B. yes, what are you not able to follow गरिमा? आपने ये सीसॉ मेथड नहीं पढ़ा है क्या? haven't you done seesaw method here? kindly respond guys, आप लोग ने सीसॉ मेथड नहीं पढ़ा है क्या? you guys don't know how to do this? किया है तो फिर वही तो कर रहे हैं ना. वी हैड डन दिस ना, कि जैसे मान लो यहाँ पे मान लो 30 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. इनका एवरेज वेट है लेट से 20 kg, इनका एवरेज वेट है लेट से 10 kg. अच्छा हो गया, चलो ठीक है, कूल. ऑलराइट, अब यहाँ पे देखोगे गाइस, तो 160 and 160 is cancelled, right? I can say AD minus AD is here, plus 16A plus 16C, ठीक है. So from here, what will I get here? If you observe here, I get nothing but I can say AD minus CB, ठीक है, is equal to, I can say 10D plus 16A plus CB, sorry, my bad, minus 16C and minus 10B. Is everybody comfortable with this equation? Please tell me. Is everybody comfortable with this equation? I have taken this AD term and CB term on this side, AD term on this side, and the other terms on one side. Is everybody okay till here? Kindly respond, guys.
Yes? Okay. Now I'll try to write the equation directly. Okay? I will try to write the equation here directly. Guys, it's a lengthy question. It's a difficult one. Please have patience. Okay? Please have patience. है ना, those who got it very quickly, they were all AI answers या फिर they have done it before, है ना. So this is not a easy one. Okay, चलो. Now if I have A comma B and if I have C comma D on the other side, ठीक है, I'll just put this phone here. I'll teach the short method also, ठीक है, don't worry, I'll teach the short method as well, right? First let me teach you the proper method, not 12 and 12. Guys, now listen carefully, okay? Observe very carefully, guys, here, that when I took 10 and 16, I got this equation, right? Now instead of 10 and 16, now I have 12 and 12. So can I directly write my second equation here without even using the ratios here, right? Can I directly write my second equation as AD minus CB is equal to 12D plus 12A minus 12C plus 12B? Sorry, minus 12B. Yes or no? All of you agree with me? Can I write this directly like this? Please tell me. If I apply the same funda here, okay? If I apply the same funda here, I'll get this equation. Instead of 10 and 16, now I'm getting 12 and 12. Yes, all of you agree? Is everybody comfortable? Okay? Okay. Now, again, the third one, okay? The third case here. So I have A comma B, I have C comma D here, right? And this is now 16 comma X. Now just compare this with this, okay? Just compare this one with this one, right? So in place of 10, I'll put a 16 and in place of 16, I'll put a X. So in this equation, AD minus CB is equal to, in place of 10, put a 16. So I'll say 16D plus XA and minus XC and minus 16B. Is everybody comfortable with this equation? Please tell me, guys. All of you should respond. Is everybody okay with this equation here? I have just replaced with 10 with 16 and 16 with X. Yes. Okay. I'm not doing the calculation again. So this saves some time for me, right? Now, if you equate 1 and 2, okay. If you equate 1 and 2, what do we get here? Let's see. Okay. If I equate 1 and 2, so if you observe in 1 and 2, what do I get from here? Can you all tell me? 1 and 2. Let's equate 1 and 2. Why? Because this is also AD minus CB and this is also AD minus CB, right? So I'll get nothing but 10D is equal to, okay? From here, I'm getting 12D plus 12A. So everything is in terms of 12. So 12D plus 12A minus 12C minus 12B. Yes, all of you agree. This is what I'll get. Okay, now. So from here, if I bring the A and this terms together here, so what do I get? Acha, is there a use of equating these two equations? Is there a use here by equating these two equations? Okay, let's see. 16A minus 12A is gonna give me a 4A, right? Okay. And then I can say 16C minus 16C and plus 12C is gonna give me a minus 4C here, right? Is equal to. On the other side, I'll get nothing but 12D minus 10D is gonna give me a 2D here. And minus 12B plus 10B is gonna give me a minus 2B here. Yes. So from here, I can say that A minus C upon D minus B is equal to nothing but 2 by 4, that is 1 by 2. Is everybody okay with this? Could everybody follow this here? This ratio is clear to all of you? Please respond, guys. Is this ratio clear to everybody here? All of you should respond. Yes? Okay, great. Now, if I equate
2 and 3, right? Now, if I equate 2 and 3 here, so what will I get? Let's see. So 2 and 3 if I equate, so 12D plus 12A minus 12C minus 12B is equal to. Now here we have 3 as 16D, XA, XC. Okay, so 16 XX and then B, 16. 16D plus XA minus XC plus, sorry, minus 16B. Is everybody good till here? Could everybody understand this much? Yes or no? Right? So from here, can we find the same ratio here? So 12A minus XA, right? So 12A minus XA here is going to give me nothing but, okay. What I can do here is, can we get the same ratio here by any chance? Can we get the same ratio, guys? If I take out X common here, so what will I get? Acha, bring all the terms on one side. Bring everything on one side. So 16D and 12D, that is going to give me a minus 4D, right? 16B and minus 12B is going to give me a 4B here. Yes. Is that correct? Okay. This is what I'm going to get here, right? 12A and 12C. Have I done something wrong here? Have I made some calculation mistake? सही है ना? ठीक है. So here I'm gonna get, what will be the ratio in terms of XA minus XC is here. So I can say XA can we get this ratio? XA minus 12A and 12C minus XC. Yes. So from here I can get X minus 12 into A plus C minus X 12 minus X into C, right? And this is 4 into B minus D. So from here I can say that ट्वेल्व माइनस एक्स कॉमन आएगा ना यहाँ पे, ठीक है. तो इफ आई टेक आउट 12 minus x common throughout, so I'll get nothing but I can say C minus A, right? And here we have 4 into B minus D, isn't it? So 4 upon 12 minus x is gonna be C minus A upon B minus D. Is that clear? Yes. Yes, is that clear? Right? So both the ratios should be same here. Now this is a very lengthy one, yeah. But here we are getting D minus B, here we are getting B minus D. Have I made some mistake of sign here? Have I made some sign mistake here? 12D minus 16D is that correct? Yes. Okay. So from here I can say 1 by 2 is equal to 4 upon 12 minus x here, right? So from here I can say 12 minus x is equal to 8. So from here the value of x is equal to 4. And that is my required answer. ठीक है? हाँ, correct. ठीक है ना? So this was a very lengthy and a very difficult question. Now a lot of people, हाँ, it's the same है ना? हाँ, ठीक है. साइन उल्टा कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दैट्स ओके. C माइनस ए है ना, तो ये ऊपर A माइनस C है, राइट? सो दिस इज द सेम थिंग. Is everybody comfortable? It's a very difficult question here. Could everybody follow? ये करने लगे तो पेपर खराब हो जाएगा, है ना? Yes. ठीक है. अच्छा, चलो. Now understand one thing here. Understand one thing here, guys. ठीक है, let's understand something here. I will teach you something else. Definitely वो AI था, ठीक है. चलो.
Let's say if you have a point here, a comma b, right? And if you have, guys, now listen carefully, okay? Listen very carefully here. If a point is there, a comma b, and there's another point c comma d, right? And there's a point here, let's say x1 comma x2, right? And this divides the line in the ratio m is to n. So we know that x1 is equal to nothing but m into c plus n into a upon m plus n. All of you agree with me? Yes or no? You guys have done this in geometry here. Yes or no? Coordinate geometry. You guys have done section formula. Please tell me, guys. Has everybody done this? Yes. All of you would have done this in coordinate geometry, right? So from here, if I cross multiply, I can say mx1 plus nx1 is equal to mc plus n into a. Okay. Now, from here, bring m terms together here. So mx1 minus mc is equal to na minus nx1, right? Take out m common here, so you'll get x1 minus c, and take out n common here, so you'll get a minus x1, right? So from here, I can say m by n, the ratio is gonna be nothing but a minus x1 upon x1 minus c. Is everybody okay with this? Is everybody okay with this? All of you? Yes or no? Right? So now we know that here, guys, understand. Okay? Please understand very carefully here that there's a point a comma b and there's a point c comma d, right? And then this ratio is coming out to be, when they are mixed in some proportion, it is coming out to be 10 comma 16. So can I say these points are going to be in a straight line here? Yes or no? All of you agree these points are going to be in a straight line here. So if this ratio is m and this ratio is n, right? So can I say that m by n should be equal to how much? Please tell me, guys. M by n should be equal to how much? All of you should tell me. See here. A minus x1 upon x1 minus c, right? So 10 minus a upon c minus 10. That should be the ratio of m by n here. Yes or no? Okay. Now, if you guys understand very carefully. Okay, very, very important concept here. If 10 comma 16 is lying on this line, then can I say the other point, that is 12 comma 12, will also lie somewhere on this line itself? Yes or no? If 10 comma 16 point is lying on this particular line, then 12 comma 12 will also lie on this particular line here. Yes, all of you agree? And 12 comma 12 will also lie on this particular line, and then I can say 16 comma x will also lie on somewhere on this line. Yes, all the 3 points will lie on this particular line as well itself, isn't it? अरे ठीक है, वो छोड़ दो, उसको जाने दो. ठीक है, let that be. हाँ, a minus 10 होगा, ठीक है, that's fine. What I'm saying is, listen to the important thing here, that all the 3 points will lie on this particular line. Yes, and if they are lying on the same line, ठीक है, क्यों? Because see, you're mixing this and this in a certain ratio, so these values will come in exactly in the middle, isn't it? The values are gonna come exactly in the middle. All of you agree? Whenever you're mixing in some proportion, okay? Now m and n will change, but all the 3 points will lie on the same line. Yes or no? All of you should respond. If you're mixing two experiments in certain ratio, then the 3 points different for different m and n, all the points will lie in the same line. So if all the points will lie in the same line, so can I say their slope should be same? Yes or no? Their slope should be same here. Yes. So 10 comma 16 and 12 comma 12, these are the 2 points. What will be the slope here? What will be the slope here? Can I say the slope is nothing but equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1? Yes. So 12 minus 16 upon 12 minus 10.
So the slope here is coming out to be nothing but I can say -2 here. All of you agree? Yes or no? Guys, please respond. Is everybody able to follow? The slope is -2, right? And if the slope is -2, so I can say 16 comma x line, 12 comma 12, and 16 comma x. For this also the slope should be -2. Yes. And what is the slope here? I can say the slope is nothing but x minus 12 upon 16 minus 12, and this should be equal to -2. So from here I'll get nothing but x minus 12 is equal to -8. So x is equal to 4. So this was the shortcut here. Okay? Because all the 3 points will lie in the straight line, so you can work on the fund of slope as well. Could everybody follow? Is everybody comfortable? It's a very good question. It's a difficult one and a very good question to learn. Okay? नहीं, if you understand, देखो रौनक, if you understand this point that the points will lie on the same line, then this is the only working that you have to do. ठीक है? This is the only working you have to do. ठीक है? If you know that the points will lie in the same line, then this is all that you have to work, right? Nothing else. ठीक है? हाँ, definitely skip करने वाला क्वेश्चन है. ठीक है? हाँ. But could everybody follow? I was just explaining you this thing. I was just explaining you this thing that this ratio is always like this. Okay? I was just trying to explain you that this will always lie in the straight line. I could have directly told you this. Okay? Yes? Comfortable? Okay, great. Chalo, let's move on to the next one now. Easy question. Chalo, all of you should get this correct. A very easy one here. कैसे क्लिक करेगा? कुछ लोग को क्लिक कर गया. हाँ जी, दिया. Yes. Now, whenever you get such a question, you can directly use this approach. ठीक है? You can directly use this fund of slope here. Getting it? Whenever you get 3 points like this, no, whenever you get a question of points like this, right, you can directly use the fund of slope here. Because the points will be collinear. They will be in a straight line. We are going very slow, guys. Slope कब equal नहीं होगा? When the lines are different. When the lines are different, ठीक है? If you have two different lines, then their slope will be different. But if the points are lying on the same line, then the slope will be same, right? y2 minus y1 upon x2 minus x1. They are collinear, right? Hemant. You have, let's say, 20 students in one class. You have 20 students in one class and 30 students in another class. If their average, let's say this is the average weight here of one class and this is the average weight of another class. In one case, you take the ratio of students as 10 and 30. Okay. In another case, you take the ratio of students as 20 and 25. In another case, you take the ratio of 30 and 45 students. Let's say these are the three different ratios you take for students. In all the three cases, you'll find that the average will lie on this particular line only. Yes or no, Hemant? Do you agree with me? Yes? Comfortable? So that is it. That is why they will lie on a straight line, right? The moment you change the number of a student, your ratio will change, right? The moment you change the number of students, your ratio is gonna change. That's it. But the points will be same, na? The average will lie on the same line itself between 20 and 30. So same approach here. Hi Pranal, how are you? Okay, is this done? Is everybody getting option A as the answer? Is everybody getting option A as the answer? Yes? Okay, great. Let's see. Rupees 4,500 were distributed among A, B, and C.
From the amount that they received, Aman spent rupees 110. Okay. Baman spent 120 and C spent 140. The amounts then left with Aman and Baman were in the ratio 3:4, while with Baman and Chaman were in the ratio 5:6. Okay. Now, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए. अच्छा. Okay, so A is to B, the ratio is 3:4, and B is to C, the ratio is 5:6. So can I combine these ratios? Can I combine these ratios? Yes, I can combine these ratios, isn't it? What I can do here is I can multiply this with 5 and this one with 4. Yes, ठीक है ना? So can I say here that A is to B is to C? The ratio is gonna be 15 is to 20 is to 25. All of you agree with me? Yes. Okay. So what is the total money they have? What is the total money that they have? What is this total coming out to be? Can I say 59x? Yes or no? The total money that they have as of now is 59x, right? So this 59x is nothing but same as 4500 minus 110 minus 120 and minus 140. All of you agree? Yes. From 4500 that the money they have is spent. If I remove that money, so that should be equal to this money here, 59x. All of you agree with me? So from here, what is the value of x coming out to be? Can you all solve this and tell me? How much is the value of x coming out to be? All of you please solve and tell me what is the value of x coming out to be. 59x is 4130. So what is the value of x? 70. Okay. Now what amount did Baman receive? So Baman received 20x plus how much has he spent? 120. So Baman has received 20x plus 120. So 20x is how much? 20 into 70 plus 120. That is 1520. Okay. So answer is option number A. Could everybody follow? Is everybody comfortable till here? All of you please respond. Yes. Okay, great. Chalo, let's move over to the next one then. Please try to solve this. हाँ मिक्स बैग है. Easy questions, difficult questions, moderate level questions. ठीक है. Basically, by the end of 6 hours, if you stay, you'll be exhausted completely. You will be exhausted like anything, for sure. If you stay till 6 hours, you will have, your day done. क्लास है 8 p.m. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. क्लास है तो क्लास भी करो. वी आर रेडी. गुड गुड. यू शुड बी. ब्रेक तो होगा ना सर? हाँ, 1 आवर का 1 आवर का ब्रेक देंगे. ठीक है, वील हैव अ ब्रेक ऑफ 1 आवर. कुछ 30-35 लोग तो भाग गए क्वेश्चन 5 के बाद. आफ्टर क्वेश्चन 5, 30-35 पीपल रैन अवे. See, until unless you will not solve difficult questions also, now how will you get a good hang of things, 5 p.m. से केडी सर की क्लास है. अच्छा, ठीक है, तो 6 to 7 आप मिस करोगे अभिजीत. क्वेश्चन 5 वॉज अ न्यू वेराइटी ऑफ अ क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन 5 वॉज अ न्यू वेराइटी ऑफ अ क्वेश्चन. व्हाट आर यू सेइंग प्रतीक? सर ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मेरी कोचिंग में ऐसा नहीं कराया, कराया है. कोई बात नहीं रौनक.
Which coaching are you from, Pratik? 9 बजे बाद तुम एलआरडी की प्रैक्टिस करने लायक नहीं रहोगे. कांट नेम. अच्छा. कराया है या नहीं कराया? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? वेबसाइट पर 26 का कोर्स नहीं दिख रहा है. अच्छा, मैं बोलता हूँ. ठीक है. आई विल इन्फॉर्म आफ्टर द सेशन, है ना. आई विल इन्फॉर्म माई सपोर्ट टीम आफ्टर द क्लास. कॉन्फिडेंशियल है सब. ठीक है यार, कहीं पे भी पढ़ो, है ना. हर जगह से कुछ अच्छा ही सीखने को मिल रहा है. जस्ट कीप लर्निंग. लर्निंग इज इम्पोर्टेंट ना, कहीं से भी ले लो. हाय स्प्रीत, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? लॉग इन बैन कर देंगे. फीस भी वापस नहीं करेंगे. चलो ठीक है, डन. आर यू गाइस डन सॉल्विंग? वेट. प्राची, आर यू स्टिल हियर? फ्रॉम R8 बैच. R8 बैच वाले कितने हैं अभी तक यहाँ पे? फ्रॉम R8 बैच, हाउ मेनी आर स्टिल हियर? ये तो टफ क्वेश्चन है. अच्छा. गुड गुड. निशांत इज हियर. R7. रिया एज वेल. Hmm. So Yash as well. Okay, good, good, nice. See, somebody who's gonna stay for the next remaining 4.5 hours, you guys will really learn a lot. Stuck in between, half solve हो गया. अच्छा. R4, R3, R2, R1. What all batches of students are here? People from different batches, they are here. Yes. Nice. R6. अरे वाह, क्या बात है. Superb. Booster batch as well. Great, great. नए सेशन के बाद पढ़ने लायक नहीं बचोगे. काफ़ी बड़ा है पढ़ने में. अच्छा. ओके, चलो. Shall we discuss, guys? Yes. Okay, let's see here. ठीक है, नहीं कर पाओगे सेक्शन इसके बाद. You will be very tired. Okay. When traveling at a certain speed, the consumption of petrol in liters per kilometer by a vehicle increases by one fourth during the uphill, decreases by half during the downhill, both when compared to a normal journey that is on the level surface and at the same speed. Okay. Two hill stations A and B are separated by a distance of 600 km, and the distance for which the road from A to B runs uphill is one third the distance for which it runs downhill. Okay. Now understand how does the question look like. Okay. ठीक है रौनक. Okay. So understand how does the question look like here. So there's a A station hill station. There's a B hill station. Okay. There's a road that goes first downhill, then it goes on the level,
and then it goes on the uphill. How many of you could figure out this diagram? First, tell me that. How many of you could figure out this diagram? First, tell me that. Okay. Now, so we know that the distance total is 600 kilometer. Hanji, Amisha, I had done similar question in class. Yes. The distance is 600 kilometer here. Yes. Okay. Not exactly same, but a similar variety. Yes, yes. कराया था definitely. ठीक है. Now, further it says here that the petrol, right? What happens to the petrol? It increases by 1/4 during uphill. So here, if the petrol is X kilometer per liter, if the petrol used here is X kilometer per liter, so here can I say it will become 5x by 4? Yes or no? हाँ, mileage नहीं था उसमें, definitely. Can I say here it will become 5x by 4? All of you agree with me? Is everybody able to follow? I'm doubtful in between B and C. हाँ हाँ, मतलब लीटर्स पर किलोमीटर, ठीक है. इतना इतना केस सेंसिटिव नहीं होते हैं प्राची, इतना केस सेंसिटिव नहीं होते. ठीक है, चलो एक्स लीटर पर किलोमीटर. भावनाओं को समझना चाहिए, ठीक है ना. चलो. So uphill, the petrol becomes 5x by 4, right? And during the downhill it decreases by half, right? So during the downhill it decreases by half. So can I say here the petrol will be x by 2 liter per kilometer? All of you agree with me? Yes. ठीक है ना, सब लोग एग्री करते हैं, राइट? ओके. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि the distance for which the road runs on the level surface is 240 kilometer. ठीक है. So this distance is 240 kilometers. Okay. And it says for a round trip from A to B and back, the vehicle use 111 liters of petrol. ठीक है. अब गाइस समझो, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है. तो यहाँ से जब ऐसे जाएगा, ठीक है, when it goes like this, it will cover a certain distance, right? Then यहाँ से आ गया, it will cover a certain distance, and then यहाँ से आ गया, it will cover a certain distance, right? फिर जब वापस आएगा, so it will cover some distance, then this same distance covered, right? And this same distance covered again. This is how the trip is gonna be happening here, right? So in that case, when it is going downhill, right? Okay, so this x by 2 liter per kilometer, right? What is the distance covered here? Can I say this 240 distance will be covered 2 times, and the petrol use will be nothing but into x? All of you please tell me. All of you please tell me. The 240 distance will be covered twice, and the petrol use will be x liter per kilometer, so into x. Yes? Okay. Now, guys, understand very carefully. Okay. It says here, where is it gone? Okay. The distance A to B runs uphill is 1/3 of the distance for which it runs downhill. Okay. So uphill distance is 1/3 of the downhill, right? That is what it says, no? A to B runs uphill is 1/3 of the distance from which it runs downhill, right? क्या नहीं समझा बताओ Siva, what you couldn't follow? When you go from here to here, when you're going from A to B, you will cross this path once. ये path आप एक बार cross करोगे, फिर जब आप वापस आओगे B to A, then again you will cross this path, right? So 240 kilometer distance has been covered 2 times. Yes or no? Do you agree with me? Do you agree with me? Please confirm. Yes. So 240 into 2 and x liter per kilometer, so into x, right? Okay. Now what is the remaining distance? 600 minus 240, what is the remaining distance? Can I say 360, right? Now this 360 distance, and it says the distance for which the road from A to B runs uphill is 1/3 of the distance from which it runs downhill, right? So this uphill distance, that is, let's say if this point is x here and this point is y. So can I say the uphill distance is nothing but 1/3 of the downhill distance? Yes or no? All of you agree with me? Yes, Ronak, 19 to 70. Is everybody comfortable? Right? So can I say xb upon ay?
is in the ratio of 1:3 distance, right? And the remaining distance is 360. So when 360 is divided in the ratio of 1:3, so can I say this is 90 and this is 270? Yes or no? All of you are able to follow till here. Please inform, guys. Please tell me. Yes, is everybody good till here? Okay. Now, if you say here that this distance is 90, guys, listen carefully. Okay, listen very carefully. When you're going uphill, okay, please be very attentive here. When you're going from A to B, okay, when you're going from A to B, so you cover this distance, uphill distance of 90 at a mileage of 5x by 4. Yes. And when you're coming backwards, B to A, then you again cover this uphill distance of 270. This distance is 270, right? AY distance, isn't it? At a mileage of 5x by 4. Why 5x by 4? Because now this is uphill for you. Yes or no? Now this is uphill, guys. All of you agree? This 270 kilometer, which was initially downhill when I was going from A to B, तो जब मैं वापस जा रहा हूं तो this is becoming uphill, right? So 270 plus 90, that is 360 kilometer. I'm covering at a mileage of 5x by 4. So my petrol use will be 5x by 4 here. Yes or no? Is everybody able to follow? Is everybody good till here? इतना सबको समझ में आया? Yes? All of you? Okay. Similarly, guys, when I'm going from A to B, okay, when I'm going from A to B, I'm covering 270 kilometers at a mileage of x by 2 liter per kilometer, right? And when I'm coming back from B to A, right, when I'm coming back from B to A, this distance Px is 90 and I'm covering this downhill at the mileage of x by 2 kilometer. Yes? Abhishek, those who could follow would have skipped. Prachi, which part do you want me to repeat? Okay. प्राची लिसन केयरफुली, ठीक है प्राची आप ध्यान से सुनो. आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी वंस, ठीक है ध्यान से सुनेंगे सब लोग. व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, आई एम कवरिंग 270 किलोमीटर एट अ माइलेज ऑफ 5x by 4 लीटर्स पर किलोमीटर. यस प्राची, एग्री करते हो ये डिस्टेंस 270 है? सो 270 एट द माइलेज ऑफ दिस, राइट? ए से बी गया, ठीक है, वापस ऊपर गया. व्हेन आई एम कमिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, सो बी टू ए, राइट? सो व्हेन आई एम कमिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम बी टू ए, so can I say that I'm covering this 90? Acha, this was from B to A, 90. Hold on. Wait, let me repeat. So when I'm going from A to B, Prachi, मैं यहाँ पे ये 90 किलोमीटर डिस्टेंस आई एम कवरिंग एट अ माइलेज ऑफ 5x by 4, है ना? और जब वापस आ रहा हूँ तो 270 कवर कर रहा हूँ एट अ माइलेज ऑफ 5x by 4. वाई? बिकॉज द मोमेंट आई ट्रैवल अप हिल, वहाँ पे माइलेज 5x by 4 हो जाता है. तो 270 यहाँ पे कवर किया एट अ माइलेज ऑफ 5x by 4 एंड 90 यहाँ पे कवर किया एट अ माइलेज ऑफ 5x by 4. सो टोटल 360 कवर किया एट अ माइलेज ऑफ 5x by 4. So total petrol use will be 360 into 5x by 4. Yes or no? You agree with me? Yes? Okay. Similarly, when I was going from A to B, okay, when I was going from A to B, I covered 270 at a mileage of x by 2 liter per kilometer. Yes, okay. And when I was coming back from B to A, I covered 90 at a mileage of x by 2. So वापस से 270 plus 90, that is I have covered 360 also at a mileage of x by 2. All of you agree? And this total petrol is given to me as 111. बताओ सबको समझ में आया? This total petrol has been given to me as 111. Is everybody good till here? All of you should respond. सब लोग respond करेंगे, ठीक है? तो अब बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? Can you all solve this and tell me the value of x? Can you all solve this equation quickly and tell me the value of x from here? कितनी आ रही है? 1/10. Okay, पक्का 1/10 आ रही है? So that is 0.1. ठीक है? So if x is 0.1, right? The question is asking what is the mileage given by the vehicle for the downhill journey, right? So for the downhill journey, what is the mileage given? Okay, so can you all tell me what is the mileage for downhill journey? The mileage for downhill journey is x by 2, right? And the value of x is 0.1. So 0.1 by 2, ठीक है? 0.1 liters
per kilometer? Yes or no? So what will be the mileage here? Please tell me, guys. What will be the mileage here? Can I say 1 x by 2? डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर दो ना, 0.1/2. ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? हाउ मच इज इट कमिंग आउट टू बी? Per kilometer. So 1 upon x by 2. That will be the mileage. Yes, and x by 2, that is 1 upon 0.1/2. कितना आएगा ये बताओ सॉल्व करके? This will be 2 upon 0.1, that is same as 20. Could everybody follow? Mileage is x by 2, right? That means x by 2 liter per kilometer. So 1 kilometer is the distance upon the petrol used is x by 2. So what is the mileage here? Can I say 20? Yes, could everybody follow? Is everybody comfortable, guys? दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है दिया, यहाँ पे माइलेज क्या है? डाउनहिल माइलेज इज x by 2 liters पर किलोमीटर. ठीक है ना? पर किलोमीटर, राइट? सो व्हाट विल बी द माइलेज? व्हाट डू यू मीन बाय माइलेज हियर? व्हाट डू यू मीन बाय माइलेज? ठीक है, सो फॉर 1 किलोमीटर, राइट? सो 1 किलोमीटर अपॉन x by 2, दैट विल गिव यू द माइलेज. सो द माइलेज इज ऑफ 20. ठीक है ना? दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द माइलेज, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि आई ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर विद माई स्कूटर, ठीक है, and I have used 50 liters of petrol, or let's say 5 liter of petrol. ठीक है, I traveled 100 kilometer at 5 liters of petrol. So what is my mileage? How much is the mileage in that case? Tell me, all of you. All of you should tell me what is the mileage here, guys. If I travel 100 kilometers with a petrol of 5 liters, so can I say my mileage is 20, not 1 by 20, dear? 100 liters, 100 kilometer and 5 liter petrol. So my mileage by bike is giving a mileage of 20, right? So similarly here, per kilometer, how much is the mileage? So 1 kilometer I'm traveling in a petrol of x by 2, and the value of x is 0.1. So substitute it here. You'll get this 2 upon 0.1, that is 20. ठीक है ना? Got it? Okay. Now the next part, the quantity of petrol consumed for the return journey from B to A. Okay. Quantity of petrol consumed for the return journey from B to A. So I can say 90 kilometers the return journey here. 90 kilometer from B to X. Chalo, let me write the return journey. B to X plus X to Y plus I can say Y to A. That is the return journey. All of you agree? This is 90 kilometer. This is 240. And this is 270. Yes. Here the mileage is X by 2. Here it is X. Petrol use per this thing, right? And here it is 5x by 4. Now just substitute the value of x here. So total petrol use will be nothing but 90 into 0.1 by 2 plus 240 into 0.1 plus 270 into 5 into 0.1 by 4. That will be the total petrol used. All of you agree? X is nothing but the amount of petrol used per kilometer when this what is it? A vehicle is traveling on the surface. ठीक है? Vehicle is traveling on the surface, then it is x liter per kilometer. ठीक है? मैंने वही तो लिखा था ना, किलोमीटर पर लीटर. लीटर पर किलोमीटर, हाँ. यस यस, राइट रौनक. हाँ सही कह रहे हो तुम. ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. नहीं सही तो है विवेक. एक्स लीटर पर किलोमीटर है. ठीक तो है ना? ठीक है, वो प्राची ने करेक्ट करा दिया था. मैंने गलत लिखा था, प्राची गॉट इट करेक्टेड. ठीक है, चलो. सो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? कैन यू टेल मी? 4.5 liter will be used here.
ठीक है. Then here I can say 24 liters will be used. And here how much will be used? What is this? ये लास्ट वाला कितना आ रहा है? 27 इंटू 5/4, 62.25. पक्का? Is everybody getting 62.25? This is coming to be 33.75. So add all of this, you'll get the answer as 62.25 liters. Comfortable. This was again a difficult one. The one that I took in the batch, no, that was the easier question as compared to this. This is a much more difficult one. Could everybody follow? Are you guys able to understand? Yes? Okay, great. Chalo, let's move ahead to the next one now. Yes, yes. हाँ, थोड़ा लेंदी था. हाँ हाँ विवेक, वो मैंने गलत लिख दिया था. मैंने वहां पे वो लिया है कि कितना पेट्रोल यूज होगा पर किलोमीटर. ठीक है. दिस आई हैव टेकन एज पेट्रोल यूज पर किलोमीटर. माइलेज इज किलोमीटर पर लीटर. तो इसलिए वहां पे डिवाइड किया ना. ठीक है. विवेक, आई होप यू कुड फॉलो. चलो नाउ प्लीज ट्राई दिस. माइलेज इज ऑलवेज किलोमीटर पर लीटर ना सिबा. ठीक है. माइलेज क्या होता है? किलोमीटर पर लीटर. जैसे भी मैंने एग्जांपल लेके बताया कि 100 किलोमीटर अगर मैं जाता हूँ 5 लीटर में, तो मेरी गाड़ी कितने का माइलेज दे रही है? 20 का दे रही है. 20 किलोमीटर पर लीटर. तो वही निकाला है ना. कि अगर मान लो 0.1 लीटर पेट्रोल यूज़ हो रहा है पर किलोमीटर. ठीक है. तो कितना माइलेज आ रहा है? अगर x/2 लेके चलना है तो 1/x/2. ठीक है ना. माइलेज इज ऑलवेज किलोमीटर पर लीटर. पिछले क्वेश्चन को टीएसडी में करेंगे और किस में करेंगे? इट्स अ टीएसडी क्वेश्चन. 15.5. Okay, we'll see. We will see if that is the correct answer. ये बड़ा चैलेंजिंग यार यूट्यूब पे ना. कमेंट भी पढ़ना पैरेलली और लैग करता है. इट्स वेरी चैलेंजिंग टू टीच मैराथन्स ऑन यूट्यूब. नेक्स्ट टाइम अपने पोर्टल पे करेंगे. ये सिमिलर वर्कशॉप में किया था. अच्छा. लेटेंसी ठीक नहीं होती यार, बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में. बीच में फंसता हो ना, मतलब जैसे बीच में कहीं पे कुछ लेटेंसी आ गई, स्टक हो गई चीज़ें है ना, तो फिर वो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. डुअल मॉनिटर है मेरे पास. डुअल मॉनिटर है मेरे पास बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है. लेटेंसी तो तब भी रहेगी ना. पोर्टल पे करेंगे नेक्स्ट अपनी. नेक्स्ट मैराथन जो करेंगे हम पोर्टल पे करेंगे. चलो. डन. कर लिया सबने सॉल्व आंसर. हाँ ओबीएसली करते हैं यार, और क्या. हाँ जी आर्यन, सबके लिए एक्सेसिबल होगा. गरिमा कह रही है 15 तो आ रहा है सर, 0.5 एडजस्ट कर देती हूँ मैं. ठीक है. चलो.
ठीक है, चलो देखें, डिस्कस करें। शैल वी डिस्कस गाइस, लेट्स सी हियर। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ मेन कंप्लीटेड अ जॉब इन एम आर्स, ठीक है। मैं बोलता हूँ लेट्स से एन मेन है, एन मेन वर्किंग इन एम आर्स, टोटल वर्क डन विल बी हाउ मच? कैन आई से एन इंटू एम मैन आवर्स? ऐसे ही करते हैं, यस और नो? द टोटल वर्क डन विल बी एन इंटू एम मैन आवर्स, राइट? बट आफ्टर एवरी 8 hours हाफ द नंबर ऑफ मेन वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लीव द जॉब, ठीक है। तो पहले एन मैन ने स्टार्ट किया, ठीक है, सो एन मैन इन 8 hours विल डू 8 ऑफ वर्क, यस, ठीक है ना? यस, ठीक है। अगर एन मैन स्टार्ट कर रहे हैं काम को और 8 घंटे काम करते हैं तो 8 एन वर्क करेंगे, ऑल ऑफ यू एग्री, राइट? आफ्टर दैट 8 hours हाफ द मैन लीव, राइट? सो नाउ 4 men वर्किंग एन आवर्स विल डू 4 units of work, 4 hours, half the number of men working at that point of time leave the job. अच्छा, half the men leave the job, yes, is that correct? The hours will remain same, right? Is efficiency directly proportional to number of women? Women कहाँ से आ गई? ठीक है, after that again half the men will leave, so now the work done will be 2n, yes or no? The work done will be 2n, yes. Total work I'm talking about total n, total work guys, total work, yes. n by 2 हुआ तो वो 4n हो जाएगा ना। 8 into n/2 कितना होता है? 4n ही तो होता है ना, ठीक है। फिर वापस से हाफ हो जाएगा, राइट? ठीक है ना, सो 2n वर्क विल बी डन, राइट? देन आफ्टर दैट n वर्क विल बी डन, एंड आफ्टर दैट n/2 units of work will be done. This is the total work that I'm writing here. Comfortable? All of you agree? Yes or no, right? ठीक है ना? सो नाउ व्हाट इज द सम ऑफ दीज? वाई 5? बिकॉज द जॉब इज फिनिश्ड इन 40 hours, है ना? जॉब हैज बीन फिनिश्ड इन 40 hours, तो 8 hours की 5 साइकिल चलेगी, 1 cycle 8 hours, देन अगेन 8 hours, देन अगेन 8 hours, अगेन 8 hours एंड अगेन 8 hours, तो 5 साइकिल 8 8 घंटे की, 40 hours वर्क इज डन, है ना? अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा टोटल तो ये कितना आएगा? कैन यू टेल मी? 8 4 12 2 14 1 15 15.5n, राइट? और क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? सो इफ यू कंपेयर दिस विद दिस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? बताओ। इफ यू कंपेयर दिस विद दिस, द वैल्यू ऑफ एम इज 15.5, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Could everybody follow? Easy one. Yes. ठीक है, चलें नेक्स्ट पे चलें। ओके गुड। क्वेश्चन 5 का अभी तक ट्रॉमा है, अच्छा। चलो ये ट्राई करेंगे अब सब लोग। ऑल ऑफ यू विल ट्राई दिस नाउ। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू। टाइम ने वर्क के क्वेश्चन परेशान नहीं करते, क्या बात है, जनरली अच्छा। ट्रू दैट, टाइम एंड वर्क एक ही कंसेप्ट है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस हियर। कितने लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं? वी स्टार्टेड एट 2 PM राइट? हमने 2 बजे स्टार्ट किया था ना?
Three ranges. Okay, we'll see. So question 8 में 16 क्या AMGM इनइक्वलिटी को आर्यन तुमने तो कर ही रखा था ना क्वेश्चन. तुमने तो पहले से ही सॉल्व कर रखा था ना वाला क्वेश्चन तो. आर्यन तो 100% लाएगा ही हमेशा. LRDI के वर्कशॉप में भी इज द फर्स्ट वन टू आंसर. 3. ओके, एनीबडी एल्स हु इज गेटिंग द आंसर? कोई और जिसका आंसर कुछ आ रहा है? 2. सर करेंटली मेरा कोई भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है. चलो ठीक है. शैल वी डिस्कस? इज एवरीबडी एबल टू सॉल्व? उसको रोजा से PPO दे दो. यार ये टॉपिक वाले क्वेश्चन राज क्लास के बाद यार. ठीक है, अभी क्लास के क्वेश्चन देख लें. दिस इज, इसको Q&A सेशन नहीं बनाना है. चलो लेट्स सी. अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 1000 रुपीज. ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस इज 1000, राइट? एंड मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 2160. ठीक है, तो MP is 2160. He gave 3 successive discount of A, B and C percent where A plus B plus C is 50. Okay. Now, if he made a profit of X percent, तो उसको profit हुआ X percent का. Then which of the following regions which will not be a possible value of X? Okay. So we have to find the minimum and maximum possible value of profit, right? अच्छा, profit minimum कब होगा? When will the profit be minimum, guys? When will the profit be minimum? मिनिमम तभी होगा ना जब किसी ए पे वो 50% दे दे और बाकी दोनों 0 0 हो जाए. Yes or no? If he's giving 3 successive discount percentages, so one of them is 50 and the other two are 0, that is when you'll get a minimum profit here. Yes. हाँ हाँ 50 है. ठीक है, all of you agree? Yes. So can I say minimum profit is if I give a 50% discount? So what is 50% of 2160? That is half of that. Can I say discount is always given on the mark price? So this is 1080. Yes, all of you agree. On 1000 rupees, you're making a profit of 80 rupees. So profit percentage is, can I say 80 upon 1000 into 100? So this is 8% minimum profit. Yes, all of you agree. Is everybody comfortable till here? Yes, okay. Now, remember from algebra we did this that if sum of 3 or more terms is constant, if sum of 3 or more terms is constant, then their value is maximum, then their product is maximum when all of them are equal. Yes or no? We have done this in algebra. If sum of 2 or more terms is constant, then the product is maximum when all of them are equal or very close to each other. Yes. So if I take a 50 by 3% discount, right? So if I take a 50 by 3% discount and 3 successive discount, so 50 by 3% is nothing but same as 50 by 300, which is same as 1 by 6. So if 1 by 6 is the fraction equivalent, so what will be my multiplying factor? Can I say on 2160, I'll have 3 successive discount of 5 by 6?
Yes or no? Is everybody comfortable? I'll again repeat, guys. ठीक है, मैं एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ. If the sum of two or more terms is constant, then their product is maximum when they are close or as equal as possible. और यहाँ पे product ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे successive discount है, एक के बाद एक, right? तो यहाँ पे ये 1/6 आ गया, ठीक है. अब 1/6 अगर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है एंड इट्स अ डिस्काउंट, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो माई मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 5/6, राइट? सो दिस इज 6 क्यूब हियर. सो हाउ मच विल दिस कम आउट टू बी? How much is this coming out to be? Can you all tell me? What is the selling price in this particular case? 5 cube. 1250, right? Okay. Now if selling price is 1250, so the profit here is, I can say 1250 minus 1000, that is 250, right? So profit percentage is how much? I can say 250 by 1000 into 100, which is same as 25%. Yes? All of you agree? So minimum profit is 8%, maximum profit is 25%. So my X is lying in the range of 8 to 25. Now which options will not satisfy? Which option will not satisfy? Can you all tell me? Which options will not satisfy here now? 8 to 25. This will not satisfy, right? And this will also not satisfy. So two of the options are not satisfying. So answer is 2. 14 to 20 will satisfy. No, it is lying in the range. 20 to 24 will also satisfy. First and fourth will not satisfy, which are not possible values of X. पूछा है ना? Question is asking which are not possible values of X. So 1 and 3, 1 and 4 are not possible. Yes? Comfortable, everybody? This was the easy one, doable. Yes or no? Could everybody follow? Yes. Can I proceed ahead to the next one? Okay, great. Please try to solve this. Again a TSD question here, but this is an easy one. देखो सत्यजीत, मिनिमम प्रॉफिट कब होगा? जब डिस्काउंट एक ही बार दोगे. यस और नो? मिनिमम प्रॉफिट कब होगा? जब डिस्काउंट एक ही बार दोगे, राइट सत्यजीत, है ना? दीज आर सक्सेसिव डिस्काउंट्स. सो एक ही बार डिस्काउंट दिया और बाकी जीरो कर दिया. अमिशा यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ आर नॉट पॉसिबल इफेक्ट्स. 6 to 10 में 7 आ रहा है, क्या 7% प्रॉफिट पॉसिबल है? नहीं है ना, ठीक है. इसमें 26 आ रहा है, 25 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्या 25 पॉइंट समथिंग पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है. टीएसडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ना, तो टीएसडी तो करना ही चाहिए. चलो करो सॉल्व. ऑल ऑफ यू शुड सॉल्व दिस नाउ. ये अभिषेक सर ने कराया है. इज इट डन? चलो ठीक है, फिर इसको स्किप कर दें.
नहीं करना है। हाँ, इसका ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। करा दूं? चलो ठीक है, ट्राई करो पहले सब लोग। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई फर्स्ट। ये तो भूल गया मैं पूरा। अच्छा। प्रोसेस देखनी है? कैसे भी कर लो यार। हाउ डज इट मैटर? 10 seconds, इज एवरीबडी गेटिंग 10 seconds? पता नहीं, ट्राई करो खुद से। रिलेटिव स्पीड लगी या नहीं लगेगी? डेफिनेटली रिलेटिव स्पीड ही लगेगी ना, बिना उसके कैसे होगा बताओ। आंसर बता दो, पहले सॉल्व तो करो। पहले सॉल्व तो करो। चलो ठीक है, लेट्स सी हियर। इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड द डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन हियर? सब लोग डायग्राम विजुलाइज कर पा रहे हैं? Is everybody able to visualize this diagram here? There's a train 1 that is going in this direction, you know. There's a train 2 that is going in this particular direction, right? With a speed of 54 kilometer per hour, and this is going with a speed of 72 kilometer per hour. Okay. अब man 1 is at the tail end of train 1, you know. Or man 2 is at the front end of train 2, right? Acha, man 2 is going towards the tail end, and this man 1 is going towards the front end. Okay. I need to know that in how much time will they meet. Okay, when the two trains cross to each other, in how much time will the two persons cross each other, right? Now, because man 1 is moving in the direction of train 1, so what is the effective speed of man 1? Can you all tell me? What will be the effective speed of man 1? Can I say should be nothing but 54 kilometer per hour? So convert this into meter per second, so into 5 by 18, and plus 2 meter per second. Yes or no? All of you agree? So that is nothing but I can say 5 3s are 15 plus 2, 17 meter per second. Yes. Similarly, what will be the effective speed of man 2? Since man 2 is going in the opposite direction as of train 2 is going this direction, right? And the man 2 is going in opposite direction. So can I say that speed will be nothing but 72 into 5 by 18 minus 3? Yes, so that is nothing but I can say 18 fours are 20 minus 3, that is again 17 meter per second. Yes, now we want the man 1 and man 2 to meet.
right? Now understand here, guys, very carefully. Man 2 is at the front end here, and man 1 is at the tail end here. And this is when the train start to cross each other, right? It says, when the train start to cross each other. So this is the situation here, right? And at this situation, the distance between man 2 and man 1 is exactly same as the length of train 1. Yes or no? The distance between man 2 and man 1 is nothing but same as the length of train 1, and the length of train 1 is 340 meter, right? So this is 340 meters. So can I say the distance covered? The time for the man to meet is nothing but the distance 340 upon their relative speed, that is 17 plus how much? 17. Yes or no? All of you agree? Yes. So this will come out to be how much? In 10 seconds they will meet. Could everybody follow? Why am I doing 17 plus 17? Anyone? Anyone has a doubt in this? Why am I doing 17 plus 17? डिटेल से क्वेश्चन था. हाँ, मुझे पता था. प्लस प्लस होना, प्लस नहीं होना चाहिए ना, है ना? देखो, अंडरस्टैंड गाइस. यहाँ पे माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए? प्लीज टेल मी. यहाँ पे माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए? प्लस. क्यों प्लस होना चाहिए? वाई नॉट माइनस? एग्जैक्टली एंजिला. ठीक है ना? स्पीड ऑफ ट्रेन इज मोर. यस, सो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. हाँ. अरे मैन इज मूविंग सेम डायरेक्शन, बट ट्रेन तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ना. ठीक है. द ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग अपोजिट डायरेक्शन, राइट? They are moving towards each other, na? Train 1 is going in this direction, train 2 is going in this direction. ठीक है ना? Could everybody follow? बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, सोचते हैं सर 17 माइनस 17 ये तो जीरो आ जाएगा. बट दैट इज अ रॉन्ग थिंग. इट विल बी 17 प्लस 17, बिकॉज द ट्रेन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ना. 340 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो, when the trains start to cross each other, when the trains start to cross each other, तो man 2 is at the front end of the train 2, है ना? And man 1 is at the tail end of the train 1. तो दोनों के बीच का गैप क्या है? ट्रेन 1 का डिस्टेंस ही तो है ना दोनों के बीच में गैप. दिस इज द डिस्टेंस टू बी कवर्ड. येस और नो? ठीक है ना? ऑल ऑफ यू एग्री? दिस इज द डिस्टेंस टू बी कवर्ड. यस. सो इफ दिस इज द डिस्टेंस टू बी कवर्ड, तो कैसे ये 340 तो रहेगा ना डिस्टेंस? वाई वुड यू टेक 500? इफ मैन टू टेल पे होता तो फिर 500 प्लस 340 840 हो जाता, माइनस. ठीक है. अगर मैन टू टेल पे होता तो फिर फाइव फाइव कितना हो जाता? 500 एंड 340 840 हो जाता. हाँ. ठीक है. द स्पीड ऑफ ट्रेन इज फास्टर देन द मैन, राइट श्रद्धा? थोड़ा लॉजिकली सोचो ना. परफेक्ट क्वेश्चन गलत कराने के लिए बनाए, हाँ बिल्कुल. ठीक है. नाइस नाइस. चलो, ब्रेक कितने बजे? ब्रेक 5 बजे है. 5 o'clock. चले नेक्स्ट पे चले. ठीक है. थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना होता है ना, सिर्फ ये नहीं देखना कि अच्छा दो मैन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड सबट्रैक्ट कर देंगे. आप ये भी तो देखो कि मैन 2 इज इन ट्रेन 2, वो ट्रेन 2 में बैठा है. यस. टोटल कितने क्वेश्चन लाया हूँ मैं मैराथन के लिए? अराउंड 30 क्वेश्चंस. चलो ये ट्राई करेंगे अब फटाफट. ये ये अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज अ गुड क्वेश्चन.
कुछ लोगों ने हो सकता है किया हो पहले से ही है। अरे ये इफेक्टिव स्पीड निकाल दी ना, इफेक्टिव स्पीड निकाली है ना उसकी। देखो मैन टू इधर जा रहा है 3 से, ट्रेन इधर जा रही है, ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है ना। वो गरिमा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला फंडा बाद में करेंगे, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला फंडा जो है वो बाद में करेंगे। यस मोनिका, इट्स अ पी वाई क्यू, गुड गुड। सो व्हाट इज द आंसर? सो व्हाट इज द आंसर गाइस? ए। ओके, एनीबडी एल्स? इज एवरीबडी गेटिंग ए एज द आंसर? चलो ठीक है, देखते हैं। द ओनर ऑफ एन आर्ट शॉप conducts his business in the following manner. Every once in a while, he raises his prices by X%, and then while later he reduces all the new prices by X%. After one such up down cycle, the price of the painting decreased by 441. ठीक है, so ये पेंटिंग का प्राइस मान लो P है, ठीक है। It is increased by X%, and then further again decreased by X%, right? And the price becomes P minus 441. Yes or no? ठीक है। Then it says after the second up down cycle, the painting was sold for rupees 1944.81. Okay, so there's one more up down cycle. So again, it is increased by X% and then again decreased by X%, right? And now it is sold for 1944.8. Now, how have you guys done this? Do you guys remember the answer or you guys have solved? Okay, so my point here is, guys, understand one thing. Okay, let's understand one thing here. Suppose there is something that is of 10,000 rupees. If you increase this by 10% and then decrease by 10%, so how much will you get? What will this value become? What will this value become? Can you all tell me? ये मुझे नहीं पता, तेजस। आई एम नॉट अवेयर ऑफ m plus d upon m minus d. Okay, 11 by 10 into 9 by 10. Can you all tell me how much will this come out to be? 9900. Okay. Now again, if you apply the same 10% and up cycle, down cycle, so how much will this become? Now it will become how much? 99 into 99. How much is 99 into 99? Can you all tell me? Again, if I apply the same up down cycle of 10%, so how much will this value become? 99 square. How much is that? What is 99 square, guys? 9801. Okay. Now, if you observe here, how much is the reduction from here to here? There's a reduction of 100, right? And how much is the reduction from here to here? There's a reduction of 99. Yes or no? All of you agree? So can I say that one thing's for sure, that the price is gonna decrease continuously? That is for sure, right? The price is gonna decrease in a continuous fashion, right? And the decrease is gonna be very close. Yes or no? The decrease is gonna be very close here, right? So now if you look at the options here, right? If you look at the options, if I start off with 2000, so 2000, if it was the initial price, minus 441 will give me 1500 something, right? 1500 something, yes. And then the price increase. Is that possible? You're using exactly the same up down cycle percentage, and we just realized that if you use the same up down cycle percentage, then the price will always increase and the always decrease, and the decrease will be very close. So can this happen that from 2000
the price becomes 1500 something and then goes up to 1944 using the same multiplying factor? No, right? So this cannot be the answer. All of you agree? Now, if 2500 was one of the options, so 2500 minus 441 is how much? Can I say 22,000 something, right? And then from 2000 something to 1944. That means you're telling me that here there's a decrease of 441 and then there's only a decrease of 100. Is that possible? Can the difference be so apart, so much distance apart? Can the difference there be so much of gap? Please tell me. 400 and 100. Can there be so much of gap here? No, right? We just saw that the difference has to be as close as possible, right? When you take 2756, what is 2756.25 minus 441? What is 2756 minus 441? Can you all tell me? Approximately, I can say 2300 around something, right? 2300 around something. Yes. Yes. And then again, if you look at 1944, that's again a decrease of around 400 something. So the difference, the gap is very less here. Yes or no? The gap is very less here. Yes, in this particular option. So I can say this is my required answer. You don't even have to solve. Could everybody follow? Is everybody comfortable with this logic here? That whenever you're having the same percentage increase decrease cycle, then the difference, the value is always gonna decrease. That is the first thing. Okay, the value will always decrease, and the decrease will be very close. It will be as close as possible. Okay, comfortable guys? Is everybody able to follow? Yes. टीटा नहीं आना चाहिए. अगर टीटा आएगा आर्यन तो यू शुड स्किप. ठीक है, इफ यू गेट अ टीटा क्वेश्चन देन यू शुड स्किप. मैं करा दूंगा गरिमा. ठीक है, आई आई टेक इट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला पार्ट. मैं अलग से करा दूंगा उसको. ठीक है, चलो. शैल आई प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट वन? उससे फर्क नहीं पड़ता यार, कुछ भी आए डिस्काउंट है ना रौनक. दैट डजेंट मैटर. चलें नेक्स्ट पे चलें. ओके, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ. कमल स्किप कर देंगे उस केस में. ठीक है, अगर ऑप्शंस आर वेरी क्लोज देन यू विल स्किप दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. कैलकुलेटर भी बहुत लेंदी हो जाएगा रौनक. It will be very lengthy to solve. Imagine you'll do something like this: p into 1 plus x by 100 into 1 minus x by 100 is equal to p minus 441. ठीक है, फिर you'll have p minus 441 into 1 plus x by 100 into 1 minus x by 100 is equal to 19 something जो भी था, है ना. So even if you take this as f1 f2, ठीक है, बहुत लेंदी है. This is a very lengthy thing. Don't do this. ठीक है, this is very lengthy. If you go it by this method, it is very lengthy. अगर आप इस पूरे को एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर एफ भी मान लेते हो, ठीक है, इफ़ यू कंसीडर दिस एज एफ, सो यू कैन राइट इट एज पी इंटू एफ इज इक्वल टू पी माइनस 441 एंड पी माइनस 441 इंटू एफ इज इक्वल टू दिस वैल्यू. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट देन अगेन इट्स प्रिटी लेंदी टू सॉल्व, है ना. यू कैन टेक दिस एज सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, है ना, बोथ ऑफ देम आर सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सो यू कैन टेक इट एज एफ और फिर सॉल्व कर लो.
Guys, just give me a minute. There's some problem with this. Okay, fine. Is it done now? Everybody could solve? Am I audible? Am I audible to all of you? कुछ प्रॉब्लम हो गई थी यार इसमें, पता नहीं स्क्रीन शेयर में. Yes? Okay. Okay. Fine. So what is the answer that you guys are getting? 14.365. Let's see. A piece of paper is in the shape of a right angle triangle and is cut along a line that is parallel to the hypotenuse. Okay. So a piece of paper is in the form of a right angle triangle like this. Okay. And is cut along a line that is parallel to the hypotenuse. Okay. So I'm going to cut this along a line that is parallel to the hypotenuse, something like this. Okay. Now it says there was a 35% reduction in the length of the hypotenuse of the triangle, right? So if there's a 35% reduction in the length, right, then remember there will be exactly same reduction in this base and the perpendicular. Okay, there will be a 35% reduction here as well as a 35% reduction here as well. If the hypotenuse is, if you're cutting this right angle triangle along the hypotenuse and there's a 35% reduction in the length of the hypotenuse, then there will be a 35% reduction in the base as well as the perpendicular of the triangle as well. ठीक है, exactly same reduction होता है हमेशा, है ना. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, if the area of the original triangle is 34, so area original is 34, right? Now, what is the area of the smaller triangle? So can I say if the base and the perpendicular is reduced by 35%, so can I say the area will also reduce, right? So 35% is how much? What is 35%? Can I say 7 by 20? So by how much will the area reduce? Can you all tell me? Area will reduce by how much? Can I say 13 by 20 into 13 by 20? Yes, that should be the case. All of you agree? All of you agree with me? Please respond, guys. Is everybody comfortable? If there's a reduction, because see, understand guys, area is equal to half into base into height. Yes? Yes or no? So can I say that area is directly proportional to the base and area is also directly proportional to the height? So if the base and the height are reduced by 7 by 20, that is my multiplying factor is, Tabish, that is what I'm telling you, know. If the base and height both are reduced by 7 by 20 factor, so the area will reduce also by 7 by 20 factor for both. This is because of base and let's say this is because of height. Yes or no? We have done this, isn't it? Monica? Yes, got it. Remember, I did this question, new area is equal to old area, that is 34 into. Base is reduced by 7 by 20. So base has become 13 by 20, right? So because base is directly proportional to the area, so I'll use the same multiplying factor. Yes. Height is also reduced by 13 by 20. And since area and height is directly proportional, so again the same multiplying factor. We have done this, isn't it? Yes. सिमिलर ट्राइंगल्स, हाँ हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर लो, सिमिलर ट्राइंगल से भी कर सकते हो. ठीक है, चलो लेट्स मूव इट टू द नेक्स्ट वन नाउ. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस. All of you should try to solve this one here.
ऐसे क्वेश्चन कहाँ से लाता हूँ, बस मिल जाते हैं। थोड़े बनाने पड़ते, थोड़े मिल जाते हैं। आई थिंक ये 13 क्वेश्चन है ना, ठीक है, वी स्टिल हैव 20 मिनट्स। सर मेरी चैट दिख रही है, हाँ बिल्कुल दिख रही है, क्या कह रहे हो बताओ। सर लास्ट क्वेश्चन में 441/p करके इफेक्टिव परसेंटेज। 441/p कैसे करोगे? p -441 हो रहा है ना, प्राइस डिक्रीज हुआ था। प्राइस डिक्रीज हुआ था ना 441 से, तो p -441 हुआ था। ठीक है ना, प्राइस 441 नहीं हो गया था, p -441 हुआ था। तो यू कैन नॉट यूज 441/p। अच्छा डिक्रीज की बात कर रहे हो, 441 करके इफेक्टिव है। अरे नहीं निकलेगा कैलकुलेटर से, करो तुम सॉल्व। बहुत लेंदी है रौनक। इट्स अ वेरी लेंदी, हाँ हाँ समझ गया मैं। 441/p, अब तुम्हें p की वैल्यू नहीं पता है तो बताओ कैसे निकालोगे? घूम फिर के वही वहीं पे आ जाओगे ना। घूम फिर के तो वही काम कर रहे हो ना जो मैंने किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला। एफ एज्यूम करके जो मैंने किया, तुम भी तो वही काम कर रहे हो ना। हाँ तो मैंने भी तो वही किया, ऑप्शन चेक किए मैंने। मैंने और इजीली ऑप्शन चेक कर लिए है ना। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, और इजीली ऑप्शन चेक कर लो। मैंने आपको एक फंडा सिखा दिया, उससे इजीली हो जाएगा। चलो हर कोई ये ट्राई करेगा एंड गिव मी द आंसर्स। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई दिस एंड गिव मी द आंसर्स। कहाँ पे डबल सेमी कॉलन यार? इसका एक और वर्जन मैं तुम लोग को नेक्स्ट उसमें कराऊंगा, नेक्स्ट मैराथन में। ठीक है। अरे वो गलती से आ गया होगा यार। आई टेक वन मोर वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। जैसे परसेंटेज में भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, तो आई ट्राई टू टेक अ वर्जन ऑफ दिस, ठीक है। हाँ हाँ वो टाइप हुई है। हाँ हाँ लूंगा यार, मैराथन लूंगा मैं, काफ़ी काफ़ी कराऊंगा तुम लोग को, डोंट वरी। विल डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। थोड़ा सा अगर दिमाग ला के सॉल्व करोगे ना, तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। इफ़ यू guys यूज़ योर ब्रेन अ लिटिल, then you will be able to solve this very quickly. लंच के बाद नींद आ रही है? अच्छा। नींद तो नहीं आनी चाहिए यार। गलत है। इनकरेक्ट आंसर। आर्यन भी आंसर गलत देता है क्या? आर्यन। हाँ हाँ दोनों गलत हैं।
ओके, आर्यन आर्यन एन ने करेक्ट आंसर दे दिया आई थिंक। बी में 3:1। सही है क्या, बी में 3:1? और ए में कितना आएगा बताओ? व्हाट विल बी इन द एस कंटेनर ए में भी? ओके, एनीबडी एल्स? और कोई जो आंसर दे रहा है? सेम आएगा? अच्छा ठीक है, देखते हैं। एनीबडी एल्स हु कैन गिव मी द आंसर? अब इसके बाद ना हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद। बहुत ही भूख लग रही है मुझे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद वील कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। 1 मिनट। तनिषा इज सेइंग 3:1। ओके, तुम लोग ने पूरा सॉल्व किया है? तुम लोग ने पूरा सॉल्व किया है इसको? कितनी देर का ब्रेक चाहिए बताओ? हाउ मच टाइम ब्रेक डू यू गाइज नीड? शैल वी रेज्यूम द सेशन एट 30 मिनट? तो बहुत कम ब्रेक है यार, मुझे भी तो खाना खाना है यार। पूरा प्रोसेस किया जैसे लिखा था। अच्छा ठीक है। हाँ, 1.5 आवर का ब्रेक कर लेते हैं आई थिंक, है ना? 1 आवर का ब्रेक कम हो जाएगा। 6:30 पे स्टार्ट करते हैं सेशन। 6:30 पे क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 6 बजे नहीं, 6:30 करते हैं। कोई बात नहीं, अब जिनकी क्लास है वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं, मुझे मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, 6:30 to 9:30। चलो ये क्वेश्चन देख लें पहले, ठीक है? ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कंटेनर ए कंटेन्स 120 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है? तो ए कंटेनर में मिल्क 120 लीटर्स है और वाटर 0 है, ठीक है ना? 30 क्वेश्चंस करेंगे अराउंड, है ना? हाँ, मैं पीडीएफ अपलोड करा दूंगा मैराथन का, डोंट वरी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद कंटेनर बी में 40 लीटर ऑफ वाटर है। तो कंटेनर बी में 40 लीटर ऑफ वाटर है। ओके, अब यहाँ पे मिल्क 0 है, ऑल ऑफ यू एग्री, है ना? अब देखो, 30 लीटर ऑफ ए इज ट्रांसफर टू सी, है ना? डी, सॉरी, सी एंड डी आर एम्प्टी कंटेनर्स, ठीक है? तो सी और डी एम्प्टी कंटेनर्स थे, तो सी में ट्रांसफर कर दिया 30 लीटर फ्रॉम ए। तो मतलब सी में जो मिल्क है वो 30 लीटर आ गया, और वाटर कितना है? 0 है। यस, ऑल ऑफ यू एग्री, ठीक है ना? और 30 लीटर फ्रॉम बी इज ट्रांसफर टू सी। सॉरी, ये डी में आ गया, माय बैड, ठीक है? डी में आ गया, ए से डी में ट्रांसफर किया, है ना? और बी से सी में ट्रांसफर किया, तो बी से सी में ट्रांसफर किया, तो सी में कितना आ गया? मिल्क इज 0 एंड वाटर इज 30। ऑल ऑफ यू एग्री, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे 90 बचा और यहाँ पे 10 बचा। येस और नो? इज एवरीबडी कंफर्टेबल? यस। अब इसके बाद क्या कह रहा है? नाउ ऑल द कंटेंट ऑफ कंटेनर सी एंड डी इज पोर्ड इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है? तो सी एंड डी का, सी का कंटेंट ए में डाल दिया और डी का कंटेंट बी में डाल दिया, ठीक है? तो अब इससे क्या होगा? ए में मेरे पास हो जाएगा मिल्क एज 90, वाटर एज 30, है ना? और बी में मेरे पास क्या हो जाएगा? मिल्क इज अगेन हाउ मच? मिल्क इज 30 एंड वाटर इज 10। अब एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे जो मिल्क का कंसेंट्रेशन है वो कहने से 75% है। यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर रेशियो कितना है? 3:1 है ना? दैट इज 75% मिल्क, राइट? और यहाँ पे भी मिल्क का कंसेंट्रेशन कितना है? 3:1 रेशियो है, तो 75% मिल्क है। यस, ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? सब लोग एग्री करते हैं इस बात से कि दोनों में 3:1 रेशियो है ना? अब बाहर से तो कोई वाटर नहीं आ रहा है। क्या बाहर से कोई वाटर या मिल्क ऐड हो रहा है बताओ इसमें? क्या बाहर से इसमें कोई आने वाले जो राउंड 2 और राउंड 3 है, क्या बाहर से कोई वाटर ऐड हो रहा है, वाटर या मिल्क? नहीं हो रहा है ना? इधर का कंटेंट उधर क्या, उधर का कंटेंट इधर क्या, यही चल रहा है ना? तो क्या कंसंट्रेशन चेंज होगा?
अगर सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है तो क्या उसकी वजह से क्या कभी भी कंसंट्रेशन चेंज होगा? नहीं होगा, तो आंसर यही रहेगा। पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है आपस में, तो कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगा ना। राइट। कंसंट्रेशन कब चेंज होता है? जब मिल्क पोर करो या वाटर पोर करो। यस और नो? ठीक है। तो जिन लोगों ने पूरा किया, जरूरत नहीं थी, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। राइट। ठीक है। चलो, गुड क्वेश्चन। चीटिंग। हाँ, वॉल्यूम चेंज होगा ना, कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगा ना। मिल्क टू वाटर का रेशियो तो सेम ही रहेगा ना। पूरा टेबल बनाया। हाँ बिल्कुल आर्यन। ठीक है। चलो। अरे जरूरत नहीं है ना करने की। कंसंट्रेशन 75% मिल्क एक में है, दूसरे में 75% है। अब तुम इधर से उधर ट्रांसफर करो, उधर से इधर ट्रांसफर करो, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है। हाँ, दैट इज व्हाट ना। हाँ चलो ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा प्रियांश। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग क्वांटिटी ट्रांसफर हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, वो एंड में रेशियो सेम ही रहेगा। क्योंकि वापस एंड में पूरा ए एंड बी में ही आ गया ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो सेम रहेगा मिल्क इज टू वाटर। अगर तुम खुद सोचो यार, मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो है वो वही रहेगा ना, कंसंट्रेशन तो उतना ही रहेगा ना। तुम कैसे भी पोर कर लो। ठीक है। हम्म। चलो 6:30 में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। विल मीट एट 6:30 ऑन 3। पूरा करके देखो, सेम आंसर आएगा। एग्जैक्टली विवेक, 120 लीटर ही घूम रहा है। 6:30 विल स्टार्ट, ठीक है, 6:30 पे स्टार्ट करेंगे अब। चलो ओके। मी सी यू गाइस एट 6:30 नाउ। हेलो।
हेलो। हाँ सिद्धार्थ, क्या करना है अभी? स्ट्रीम एंड करनी है? पक्का एंड कर दूँ?
Hi everyone, welcome back, guys. Hi Garima, hello Prachi, welcome back. Hi Abhishek. Yes, hi Diya. Enjoyed the break. सबने break enjoy कर दिया. Hi Sejal, hi Riya, hello Prabhu, hi Siva, hi Sai. Okay. एक बार जो जिस बैच से उस ग्रुप में मैसेज डाल दो कि द सेशन इज लाइव अगेन so that people can join in. क्या खाया अकेले अकेले? रौनक पूछते ऐसा रहा है जैसे रौनक ने खुद पूरे अभी मोहल्ले को खिला के ना भेजा है वापस हैं. क्यों रौनक? पूरे मोहल्ले को इनवाइट किया था ना तुमने अपने? चलो ठीक है, कंटिन्यू करें. नींद पूरा नहीं है क्या रौनक? डीएलआर कर रहा था. अच्छा. हाय अर्शिता. हेलो प्रथमेश, वेलकम बैक. चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेशन हियर. नाउ ऑल ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर. पार्टी? क्या? कंटिन्यू करते हैं, हाँ. बिल्कुल पार्टी कंटिन्यू करते हैं. सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ एवरीबडी. अभी बहुत सारे बैचेस की क्लासेस चल रही हैं क्या? आई थिंक केडी सर की भी क्लास चल रही है आई सपोज. क्वांट की तुम लोग की 8 बजे क्लास है आई गेस, है ना? यू गाइस हैव क्लासेस इन बैचेस आल्सो, राइट? दैट इज अ रीजन मे बी. हाय आर्यन. R6 फ्री है. चलो नाइस, R6 आ जाए. जो बैचेस फ्री हैं वो करें क्लास, है ना, यहाँ पे मैराथन. दे बेनिफिट फ्रॉम इट. हाँ जी, हाँ जी, R4 इज ऑल्सो फ्री, राइट. R1, R2, R3 भी फ्री हैं. ऑलराइट, डन. किसी ने किया सॉल्व इसको? एनीबडी कुड सॉल्व? R5 8 PM क्लास है, अच्छा. हम्म. सभी फ्री हैं. 4:1. ओके. मूड ऑफ नहीं तो? मूड क्यों ऑफ होगा? ऑल गुड यार. चलो फटाफट ट्राई करेंगे सब लोग, ठीक है? ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई. हाय अनुशिका, गुड इवनिंग.
खाने के बाद का आलस है। कुछ खाया नहीं यार मैंने। जस्ट हार्ड माई प्रोटीन शेक बस। और कुछ नहीं खाया। टोन इज बिट डिफरेंट। नहीं नहीं, नथिंग लाइक दैट। खाना अच्छा नहीं होगा। सेम प्रोटीन शेक है, एवरी डे आई टेक इट, है ना। माई वॉइस इज अ लिटिल लो अगेन। आई थिंक नहीं, इट शुड बी ऑडिबल यार। अभी वापस से स्टार्ट किया यार, अभी लेग इंजरी है थोड़ी सी, सो उतना तो नहीं जा पाता हूँ, मतलब उतना वर्कआउट नहीं हो पाता है। देखते हैं विवेक कितने हो पाते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन डू हियर। क्या एमबी, क्या मसल ब्लेज? नहीं नहीं, ऑन का है। पहली बार तो लाइफ में ट्राई कर रहा हूँ। चलो ठीक है, डिस्कस करें। शैल वी डिस्कस हियर? गरिमा इज गेटिंग 5:1। एनीबडी एल्स? 7:1 आ रहा है कुछ लोगों का, कुछ का 4:1 आ रहा है। ऑल ऑफ यू गिव मी आंसर्स। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में अनुशिका, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। पैसा। देखो यार, इन सब चीज़ों में वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, द्वितीय इज गेटिंग 7:1, आर्यन इज गेटिंग 5:1। लेट्स सी। इन अ सिटी द कंजम्पशन ऑफ राइस इज 7 times द कंजम्पशन ऑफ वीट, ठीक है। तो अगर मैं वीट का कंजम्पशन, इफ़ आई टेक इट एज 100, तो कहने से राइस का कंजम्पशन 700 हो जाएगा। येस, ऑल ऑफ यू एग्री? येस और नो? ठीक है ना। अब कह रहे हैं X% मोर राइस, ठीक है। X% मोर राइस, तो कहने से X% ऑफ 700 is nothing but 7x, right? And Y% more wheat. So Y% more wheat means Y% of 100 is nothing but Y itself, right? The aggregate amount consumed would be 9z% more, ठीक है? Yes, ठीक है. So aggregate amount will be 9z more. So can I say that 7x plus Y is equivalent to 9z? All of you agree with me? Yes or no? ये 7x है, ये y है, इतना का अगर इंक्रीज हुआ तो एग्रीगेट 9z से बढ़ जाता है. सो कैन आई से 7x plus 9y is equal to 9z? ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड. यस, ओके. फिर क्या कह रहा है? बट इफ y% मोर राइस, तो इफ y% मोर राइस दैट मीन्स 7y, राइट? And x% more wheat is consumed, that is x. Then the aggregate would have been 3z more. So this is equal to 3z. Is both the equation clear to all of you? Is everybody able to follow both the equations here? Yes. तो अब सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कैन से इट विल बिकम इक्वल टू द फर्स्ट इक्वेशन? यस. सो फ्रॉम हेयर कैन आई से दैट 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 21y. तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? 4x इज इक्वल टू 20y. सो x by y the ratio will be 5:1, and that is what has been asked here. So answer is option number 1. Could everybody follow? It was an easy one. It was a pretty easy one here. Yes. Pretty easy question here, guys. All of you agree with me? Yes. Chalo. Let's move on to the next one now. Please try to solve this. This was easy. बनना चाहिए था. ये भी easy है. This question is more for revision now. It is not the first question. It was the 14th question. ठीक है. Now these questions are more for your revision purpose. ठीक है. So that you revise the concepts and everything. Okay. Good century लग चुकी है for the people who are live. Yes. First question of the second session.
Not all. We'll do couple of mostly अब revision वाले questions हैं थोड़े. Questions are on the easier side now. ठीक है. More towards CAT level. We have already done a lot of difficult question in the first session. Good, Abhishek. Nice. A lot of people will not be able to recollect this. अरे वाह शिका, क्या बात है. Good. Hi शिका, कैसे हो, क्या हाल चाल? You were there in the first session, Ishika? Entire session? Alright. Why? Chalo, let's see here. A man can walk up a moving escalator in 30 seconds, right? Let's say the speed of man is equal to m and the speed of escalator is e, right? Now, if the man can walk up in a moving up escalator, so can I say n is equal to number of steps covered by man? So in 30 seconds, the man will cover, can I say 30 into m steps? Yes or no? If the man is moving at a speed of m steps per second, then in 30 seconds, man is gonna cover 30 m steps, right? In the same time, the escalator would cover 30 e steps, right? The same man can walk down this moving up escalator in 90 seconds. So the same man can walk down this moving up escalator in 90 seconds. So can I say the number of steps covered by man in this case is 90 m, right? And because it is coming down moving up escalator, so against Ri, so in that case I'll take minus 90 e, right? So from here I can say that 30 m 120 e is equal to 60 m, right? So from here the ratio of m by e will be how much? What is the ratio of m by e? Can I say 2 is to 1? Yes, all of you agree with me? The ratio of m is to e is 2 is to 1? Yes, comfortable guys? Okay. Now further it says how much time will it take to walk up the escalator when the escalator is not moving, right? So number of steps taken by man. If the escalator is not moving, that means the speed of escalator is 0, right? So number of steps taken by man will be 30 m. That is 30 m plus 30 e. Now convert this entire thing in terms of m, ठीक है? इस पूरे को m के terms में ले आओ. So we know that e is equal to m by 2. So this will become 15 m. And these many steps have to be covered by the escalator or by the man himself, right? So divided by the speed of a man, that is m itself. So this is coming out to be 45 m upon m here, which is same as 45. Could everybody follow? Could everybody follow this? Yes, because it says how many steps will the man take if the escalator is not moving. So the speed of man you will take in the denominator, and this is the total distance that is supposed to be covered in terms of man, right? Okay. Now another thing is that if speed is in AP, then time is in HP. All of you know this, right? And vice versa. Yes or no? If the speed is in arithmetic progression, then the time is in harmonic progression, isn't it? Now, if you look at the speed and the time, right? So the speeds are, can I say m plus e, m and m minus e? Yes. M minus e is when man is going against the escalator. M plus e when man is going with the escalator. And m is the speed when the escalator is not moving, right? In this scenario, the time taken is 30 seconds. In this scenario, the time taken is 90 seconds. Let's say here the time taken is k. So if you observe here, the speed is in an arithmetic progression here. So the time should be in harmonic progression, right? So the time should be in harmonic progression. So this value k should be nothing but the harmonic mean of 30 and 90. So the value of k will be nothing but equal to, I can say, I'll write it here, 2 into 30 into 90 upon 30 plus 90, that is 120. Yes, 2ab upon a plus b, that is the harmonic mean of two numbers a and b. So this will come out to be 45 itself. So that is the time taken here. Could everybody follow both the methods?
Is everybody comfortable with both the approaches here? How many of you did not know the method 2? कितने लोगों को method 2 नहीं पता था? 2 is better, yeah. 2 is a better approach. Method 2 नहीं आता था. Who else? Prachi, why we have done this in R8 यार? हमने R8 बैच में नहीं किया है क्या? We have done this in the R8 batch, right? In first method, this is a way of finding the number of steps. Yes, Abhishek, ठीक है. This is a method of finding the number of steps. Can't remember, I'll check. Okay. Prachi, it's simple, no? If you see the speeds are in AP here, right? M plus E, M minus E. Isn't it? चलो, ठीक है. Let's move on to the next one. Please try to solve this now. New but more comfortable with method 1. हाँ ठीक है, जैसे भी. Whatever, suits you the best, you can use that. चलो, everybody will try this now. Let's see how many of you can solve this. It's a good question to solve here. R8 में नहीं किया है. I haven't taught in R8. सुयश, नहीं पढ़ा है मैंने R8 में. I have taught it in R4 also. Maybe I've missed it. ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा. I'll cover it up. ठीक है. We'll have a session, cover कर देंगे उसको. हाँ, maybe I've missed. Probably. मिस कर दिया होगा मैंने. चेक कर लूँगा मैं एक बार. I'll check once. 2 1 by 3. Okay. Sorry. Anybody else? Anybody else who can give me the answer? Ishika is also getting option C. That is 2 1 by 3. Okay, chalo, let's see. Okay, take your time. हाँ जी, सुयश बताओ क्या हो गया. टेल मी. हाँ हाँ, समझ गया.
ठीक है, चलो ये डिस्कस करें. वी हैव डन सिमिलर वेराइटी, है ना. वी हैव डन अ सिमिलर वेराइटी. So let's try to solve this here. It says there are three drain pipes P1, P2 and P3, all of equal capacity, fitted to a cylindrical tank of height 6 meters. ठीक है. So the height of this tank is 6 meters here. P1 is fitted at the bottom of the tank. Alright, so P1 is fitted at the bottom of the tank, right? While P3 is fitted at a height of 5 meter above the base of the tank. So P3 is fitted here. So can I say this distance is 1 meter, right? And P2 is fitted between P3 and P1. So P2 is fitted somewhere between P3 and P1, right? So can I say if this height is h, so this height will be 5 minus h? Yes or no? All of you agree with me? Is everybody comfortable till here? If this height is h, then this height will be 5 minus h, right? Now P1 alone can empty the full tank in t minutes. Okay. So P1 alone can empty the full tank in t minutes. So in t minutes, it can empty 6 meter, right, of tank, isn't it? So can I say for emptying 1 meter, it is gonna take t by 6 minutes? Yes or no? And let's say the efficiency is 1 for P1 pipe, right? Let's say for each of the pipe, the efficiency is 1. So I can say t minutes, it empties 6 meter. So for 1 meter emptying, it will take t by 6 minutes. Is everybody comfortable till here? Is everybody good till here? Please confirm, guys. Could everybody follow? Yes. All right. Now, further it says, and if all the three pipes are in operation, then the full tank can be emptied in 2t by 3 minutes. Okay. So, if all the three pipes are in operation, then the full tank can be emptied in 2t by 3 minutes. Okay, great. So, I'm saying here, my point is that the first 1 meter can be emptied by how many pipes? Can I say for the first 1 meter, all the three pipes will be operating? Yes, all of you agree. So to empty 1 meter, okay, to empty 1 meter, if there is one pipe involved, it takes t by 6 minutes, right? So if there are three pipes involved, then how much time will it take? Can you all tell me? If there are three pipes involved, then how much time will it take? Can I say if the efficiency is becoming three times, then the time will become one third? Yes or no? Because the efficiency and time is always inversely proportional to each other. If more the efficiency, then lesser the time. So can I say it will take exactly t by 18 minutes to empty the first 1 meter? All of you agree with me? Yes? Not t by 2, guys. You will not multiply by 3. Please don't make that mistake. Very common repeated mistake all of you will make. है ना? T by 2 कैसे होगा? If one pipe is taking t by 6 minutes to empty 1 meter, so three pipes will take lesser time, no? How can it take more time? Isn't it? Yes or no? All of you? Is everybody able to follow this? ठीक है? Again, Prabhu, t by 6. Acha, you have written 6 into it. ठीक है, fine, cool. Now, so for the first 1 meter, the time taken is t by 18 minutes, right? Now, after the 1 meter has been emptied, so for the next h meter, this length here, right? Can I say only pipe P2 and P1 will operate? Yes or no? Only pipe P2 and P1 will operate, right? So can I directly write it now? For 1 meter, they'll take t by 6. So if two pipes are operating, this time will become 1 by 2. Yes or no? Can I directly write this? All of you please confirm. Can I straight away write it like this? And the height is now h meter, so into h. Yes. For 1 meter, two pipes will take this much time. So for h meter, they'll take 1 by 2 into t by 6 into h. Is everybody comfortable? Alright. Now, after this is emptied, so then for 5 minus h, only P1 will operate, right? So for 5 minus h, if only P1 will operate, so for 1 meter it takes t by 6. So 5 for 5 minus h, it will take t by 6 into 5 minus h. Yes. And this total time has been given to me as 2t by 3. So this is equal to 2t by 3 here. Could everybody follow this? Is everybody comfortable? Kindly respond, guys.
Yes, Sai, I'll share the PPT. Is everybody good till here? Please tell me, guys. Yes? 1/2 प्लीज बताना. आर्यन क्या डाउट है तुम्हारा, बताओ. आर्यन देयर इज नो डाउट ऑफ योर्स. अच्छा आर्यन, आप वन एफिशिएंसी एज्यूम कर सकते हो. नहीं भी करो, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इफ देयर इज वन पाइप तो वो T/6 ले रहा है, तो 3 पाइप T/3 लेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ना कि ऑल द पाइप्स आर ऑफ इक्वल कैपेसिटी. येस और नो? ठीक है. द फर्स्ट लाइन ऑलरेडी सेज दैट ऑल द पाइप्स आर ऑफ इक्वल कैपेसिटी. यस. ओके. सर 1/2 प्लीज बताना. देखो, जब एक पाइप है तो 1 मीटर एम्प्टी करने के लिए T/6 लगता है. तो जब दो पाइप हो गए तो कितना टाइम लगेगा? अगर एफिशिएंसी ट्वाइस हो रही है, अब दो पाइप ऑपरेट कर रहे हैं, तो टाइम हाफ हो जाएगा ना. सो इट विल बिकम T/6 इंटू 1/2, दैट इज T/12. तो वही लिखा है मैंने, T/6 इंटू 1/2. यस. कंफर्टेबल निर्मन, कुड यू फॉलो? ठीक है ना? ओके. नाउ if I take out t common here, so what will I get? If I take out t common and if I cancel it, ठीक है, I can take out t common and cancel it throughout. Yes, I can cancel it from this side. So from here, what will I get? 1/18 plus 1/12 into h plus 1/6 into 5 minus h is equal to 2/3. Can you all solve this and tell me the value of h coming out to be how much? What is the value of h coming out to be? Everybody can solve this equation now. Is it coming out to be 2 1/3? Is it coming out to be 2 1/3 meter? The value of h from here? Please confirm, guys. Is everybody getting this value? I'm not solving. I'm not doing the calculation part. ठीक है ना? 8/3. Yes. So that is 8/3 or 7/3? How much you're getting from here? On solving this, we are getting 8/3 or 7/3? Do I need to solve? You shouldn't get 8/3, yaar. H is 8/3. अच्छा, ठीक है. So what is the question asking? What is the question asking here? The question asking what is the height at which P2 is fitted to the tank. So P2 is fitted to the tank, that is from this particular, right? From the bottom height, right? This value I'm supposed to find. So 6 minus 8/3. Is that the case? H is coming out to be 8/3. So this length is 8/3. This is 1. So I can say P2 is fitted to the tank at 6 plus 5 minus 8/3. Yes. 5 minus 8/3. That is the height at which P2 is fitted. So that is 7/3. So answer is 7/3. Yes. ठीक है. Could everybody follow? Could everybody follow this? Yes. ठीक है. Can I proceed ahead to the next one? अरे मैंने देखा नहीं है, मैं ध्यान नहीं दिया क्या पूछ रहा था. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो दिस फंडा इज क्लियर. आई थिंक वी हैव डन लॉट ऑफ क्वेश्चंस. वी हैव आल्सो डन सिमिलर क्वेश्चन इन क्लास एज वेल. So I hope this funda of pipe fitting at different level is clear. You guys understand how to work on the efficiency? Yes? Okay, great, superb. Now please try to solve this. मैराथन का फिट सब पे बराबर है. नहीं, मैंने रीड नहीं किया अभिषेक वहाँ पे क्या पूछ रहा था. मैंने बस एच की वैल्यू निकाली. आई थॉट दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग. चलो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ. 5 1 and 2 के लिए T/6 क्यों लिया? अरे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि T मिनट्स में 6 मीटर एम्प्टी करता है.
फुल टैंक इट कैन एम्प्टी इन 3 मिनट्स. तो 1 मीटर एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लगेगा? T/6 मिनट्स, इजंट इट? तो सबकी कैपेसिटी सेम है ना, P1 P2 P3, ऑल हैव द सेम कैपेसिटी. ये लिखा हुआ है यहाँ पे. गॉट इट? 1. Okay. Anybody else who can give me the answer here? Ishika, what about you? Prachi, Sujit, Suyash, Amanpreet, Sujata, Abhishek, Prabhu, Ronak is getting one. Okay. 1 minute. अच्छा. अरे कह रहा मैं भी पीछे से 2x करके आया हूँ. कोई बात नहीं. 1. अच्छा जी. चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं. लेट्स सी हियर. हाय श्री, आई एम गुड या, हाउ आर यू? ऑलराइट, लेट्स सी. ठीक है. A total number of 140 criminals in a jail are divided into three groups, A, B, and C. The average number of crimes committed by the criminals of group A, B, C are 10, 12.25, and 13 respectively. Okay. So crimes average, ठीक है, is nothing but 10, 12.25, and 13 respectively for group A, B, and C, right? Now it says if there are total of 45 criminals in group C, so group C has 45 criminals. So what is the total number of crime committed in group C? Number of criminals in group C is 45. So total crime is how much? Can you all tell me what is this value coming out to be? 45 into 13 is how much? 585. Okay, cool. Then it says which of the following is true regarding K, where K is the average number of crimes committed by all the 140 criminals put together. Okay. Now understand one thing here, that the number of criminals, right? The total crime should be integer and the number of criminals here should also be integer. Yes, and since this is a higher average, okay, since this is a higher average, so what is the minimum possible value of B? Can you tell me what is the minimum possible value of B? Minimum possible value of B, so that this is an integer value, total number of crimes. 4. Yes, dear, absolutely correct, right? All of you agree that should be 4, right? So if I take 4 here, so what is the total number of crimes committed? What is the total number of crimes committed? Can I say 49, right? 49 here, right? Now, since there are a total of 140 criminals, so 45 plus 4 is 49. So can I say remaining 91 criminals are from group A? Yes. And if remaining 91 criminals are from group A, so total crime committed by them is 910. Now, if you add all the crimes here, so 910 plus 49 is 959 plus 585. Can you tell me how many crimes in total? I can say 1544. Yes, right? And since there are 140 criminals in jail, so 1544
divided by 140. How much is this value coming out to be? Can anybody tell me? This is the average number of crimes for the entire this thing, all the 140 people. So what is the value of k coming out to be from here? Can anybody tell me what is the value coming out to be? 11 point something, right? Now, can I say this value is fixed? 11.02. Okay. Now, can I say that this value is fixed here? 45 is fixed here. Now, after 4, the next possible value is 8. Yes. And the moment I take this as 8, can I say my average will increase? Yes or no? Shripati, this has to be integer value, na? So what number should you multiply 12.25 with so that you get an integer? The minimum possible value is 4, right? After that, the next possible value is 8. And can I say the moment I replace 4 with 8, my average is gonna increase further? It cannot decrease. Yes. So I can say my k should be greater than 11. So answer should be option number 2 here. Could everybody understand? All of you, those who are getting 1 as the answer, काफी लोग का 1 आया था, अमनप्रीत, इशिका and others who got 1 as the answer. Could everybody follow? Angela as well. Yes. Roshan, Sujit, Sumukh, Tanishk, Prabhu. All of you could follow. 8 वाला पार्ट ये कह रहा हूँ मैं कि अभी देखो यहाँ पे दिया this is 4, right? Now the moment you make it 8, right? So this average, this total 12.25 is more, right? It is greater than 10. If you calculate the average using 8, 8 into 12.25 is how much? Can I say 98, right? In that case, when this is 8, this will be 87. So this will become 870. Yes? Yes or no? You cannot take B as 0. If they're divided into 3 groups, then how can you take B as 0? Isn't it? And then when you, this is still 585. Now you add this value. You add the total 8, 5, 13, 3, 1 carry over. 8, 8, 16 and 25, 5, 2 carry over. 8 to 10, 5, 15. See, the total is coming out to be more than this, right? So can I say the average is gonna go up further? एवरेज तो ज़्यादा ही जाएगा ना. और लॉजिकली भी आप सोच सकते हो, पहले 4 पे 12.25 था, अब 8 पे 12.25 है, एंड 12.25 इज ग्रेटर देन 10. यस राशि, टू मेक इट एन इंटीजर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है. कुड एवरीबडी फॉलो? इज एवरीबडी गुड टिल हियर? कैन आई प्रोसीड एट टू द नेक्स्ट वन? Yes. Okay, please try to solve this. All of you should get this correct now. This is again a CAT level question, typical CAT level easy question. हाँ, क्वेश्चन थोड़े इजी रखे ना आर्यन मैंने. I have kept slightly easier questions. Two one two. This is a typical CAT level question. Okay, this is a typical CAT level question. You'll find such questions in CAT. Still, you will not be able to solve. And you know why? Because either you will miss on the question, okay? Your strategy might not be in place, or you will panic and you will make some silly mistakes, right? So this is what time pressure does to you. The question will be of exactly same level, but time pressure is something that is gonna make things, worse for you. So please, that is all. I always say that write mocks, write as many mocks as possible. ठीक है ना? All right, done.
Shall we discuss here? 380. Is everybody able to solve? Each one of you? 212. Okay. Let's see. A fuel merchant purchased 20 liters of petrol at rupees 50 per liter. So what is his investment? Can I say his investment is nothing but rupees 1000? Yes. This is what he has invested, right? 12 liters of it is sold at rupees 55 per liter. Okay. So 12 liters he's selling at 55 per liter. Okay. And to the remaining petrol, he added 40% kerosene, right? So remaining petrol is how much? Remaining is 8 liter petrol. And to this, he's adding 40% kerosene, right? So that means he's adding exactly how much kerosene here? Can I say he's adding 3.2 liters of kerosene? Yes or no? So now he has a 11.2 liter mixture in which 8 liters petrol and 3.2 liters kerosene, right? Now, further it says the cost of which is rupees 20 per liter. Okay, so the cost of kerosene is 20 per liter. So I can say 3.2 kerosene he has added and it has costed him rupees 20. So the investment here is nothing but 64 rupees, right? Okay. Now, if he sold this new mixture at the rate which he sold the first 12 liters, now he's selling this 11.2 at 55 itself. Yes. So I can say 11.2, or rather I can say that 12 liters at 55 and 11.2 at 55. So total money that he's making is nothing but I can say 12 plus 11.2 into 55, right? So how much money is he making? Can you all calculate this and tell me how much is this value coming out to be? 23.2 into 55 is how much? Please tell me, guys. 1276. Okay. And from this, just subtract his investment cost. How much is the investment? 1064. So how much profit is he making? 212 rupees. Could everybody follow? Is everyone comfortable? This was a easy one again. Yes. Easy question. Typical CAT level question should give you some confidence here. Okay. Chalo. Alright. Let's move ahead to the next one now. Now please try this. Angela, I think with a little bit of more practice, you will improve because you're getting answers correct. Okay, थोड़ा बहुत इस speed you will work on it. It will improve, है ना? And I'll take lot of sessions going forward in the next 60 days. The moment I have time, whichever day I'm free, I'll take a session. Like tomorrow, there's no class for me, so I'm taking LRDI live tomorrow. Okay, we'll do one amazing set tomorrow. All of you, please do join. Right? So 7 p.m. to 8 p.m. tomorrow, I'll take a LRDI live session. Okay, we'll do a wonderful set there. So all of you can join that class as well. Okay. So I'll keep taking sessions as much as I can, right? I'll give you a lot of practice on portal, on YT, yes, on YT itself, tomorrow on YT. ठीक है. आप लोगों ने लास्ट मेरा YT लाइव किया था, लास्ट LRDI लाइव. Do solve that set if you have not attempted. It's a very good set, है ना? काफ़ी अच्छा सेट था वो, जू वाला, राइट? तो वो भी कर लेना आप लोग. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल.
डिलीवरी वाला। LRDA मैराथन प्लान करता हूँ किसी दिन पर आप। आई प्लान समडे। हाँ अच्छा सेट था, इट वाज गुड इंटरेस्टिंग सेट। राइट चाहत है ना। हाँ सो सेम इशू फॉर यू एज वेल, यू हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन इट है ना। 600 1200। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग 600 and 1200? How many of you are getting 600 and 1200 as the answer? Option number one. Aryan is getting. Garima as well. Can I say the best way to solve this question is to backtrack? Yes. Can I backtrack this question here with the help of options? That is the most easiest way of doing it. Yes, all of you agree. ठीक है ना? So let's try to backtrack this. आप लोग खुद से solve करना traditionally. I'll just backtrack it for you. ठीक है? Let's do the backtracking part here. In an election contested by two parties A and B, there were 24 eligible voters. Okay. There were 2400 eligible voters, right? Party A was expected to win the election. However, on election day, 33.33% of the people who wanted to vote for A were kidnapped. Okay? So those who were voting for A, one third of them were first kidnapped. Okay? So they were kidnapped here, right? Party B was also able to influence some of the remaining Party A's voters and does double the strength of its votes as compared to the initial strength of the votes. Okay? So whatever voters are remaining, it took exactly half of the votes to Party B, half of the voters. Sorry, wait, half. Some of the remaining part. Okay, some of the remaining party voters, but it doubled its strength. Okay, so Party B finally doubled their strength. Okay, so they doubled their strength by taking some voters from A to B. They influenced, right? Okay. Party A lost by a majority which was half that of by which it could have won. Okay. Had the elections been fair. How many people finally voted for Party A and Party B respectively? Now, just backtrack. Simple. B has right now 1200 votes. Okay. For example, if I say option B is correct, let's say. Okay. So B has right now 1200 votes. Disha, I'll tell you step by step. Okay. Listen carefully. B has let's say finally 1200 votes. ठीक है. सो अगर बी के पास अभी 1200 वोट्स हैं तो इट हैड डबल्ड इट्स वोट्स. बी ने अपने वोट्स डबल किए थे. कैसे डबल किए थे? इट टुक सम वोटर्स ऑफ पार्टी ए बाय इन्फ्लुएंसिंग देम. येस और नो? सो बिफोर दिस स्टेप कैन आई से पार्टी बी हैड 600 votes? Yes or no? And A has 600. So before this step, A would have had 1200 votes. All of you agree with me? Before this step, just before the influence part happened. Yes? Is everybody comfortable? All of you agree? Before influencing, okay, B had some votes. After influence, B doubled its votes. So finally, if B has 1200 votes, then before this step, B would have had 600 votes. और 600 वोट जो उसने ऐसे लिए थे वो वापस यहाँ पे कर दो. ठीक है. Now before this step, kidnapping happened. So one third of the voters who were supposed to vote for A were kidnapped. So can I say this is 1200 is nothing but two-third of the voters, right? So two-third of total voters of A is equal to 1200. So can I say A is equal to nothing but 1800 voters, right? So 1800 voters are supposed to vote for A, isn't it? And B is 600. And total combined is exactly 2400. So that is my correct answer. Yes? Could everybody follow the backtracking part here? So whenever you're getting such questions, always take the help of options. It's always a great idea to take the help of the options and backtrack the values. Whenever you backtrack, it will be easy for you. Comfortable everyone? Disha, could you follow? Everybody could follow this. सबने ऐसे किया था. How many of you did it like this? The way I have done. Anybody who has done it like this? Which part do you want me to repeat? देखो फाइनली वोट्स कितने थे? एंजिला, सत्यजीत, यू एग्री विद मी? फाइनली वोट्स वर A has 600 votes, B has 1200 votes. ये फाइनल था. Yes or no? This was the final thing here. Angela and Satyajit.
इस लाइन का कोई, अगर आप ऑप्शन यूज कर रहे हो ना, तो इस लाइन का कोई रेलिवेंस नहीं है कि पार्टी ए लॉस्ट बाय मेजोरिटी विच वॉज हाफ ऑफ दैट बाय विच इट वुड हैव वन। इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है यहाँ पे। आप कोई भी वैल्यू लेके स्टार्ट करो ना, आप कोई भी ऑप्शन चेक करो, ठीक है। मैंने ऑप्शन ए चेक किया, राइट, बिकॉज यू गाइस टोल्ड मी द आंसर। अरे ये ऑप्शन ए को मैंने चेक किया है। प्राची, एंजिला, सत्यजीत, प्रियांश, आई एम चेकिंग इफ माई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो फाइनली बी के 1200 वोट्स हैं, ठीक है। ए के 600 वोट्स हैं। इससे पहले क्या हुआ होगा? ए के वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया गया था, राइट। द पार्टी ए वोटर्स वर इन्फ्लुएंस एंड डबल द स्ट्रेंथ ऑफ इट वोट्स फॉर कंपेयर टू इट्स इनिशियल स्ट्रेंथ। तो बी की स्ट्रेंथ डबल हुई थी। मतलब इसके जस्ट पहले वाले स्टेप पे बी के पास सिर्फ 600 वोटर रहे होंगे और ए के पास 1200 रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 600 इधर से इधर चले गए ना, इन्फ्लुएंस की वजह से। तो इससे पहले वाले स्टेप में ये हुआ होगा, राइट। उससे पहले वाले स्टेप में क्या हुआ था? किडनैपिंग हुई थी उससे पहले, है ना। तो 1/3 वोटर्स किडनैप हो गए थे। तो अगर 1/3 वोटर किडनैप हो गए थे तो मतलब ये जो वैल्यू 2/3 है। तो 2/3 अगर टोटल वोटर्स की 1200 है तो टोटल वोटर्स ए के इनिशियली कितने थे? 1800 थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हारा कितने से है? हारा कितने वोट से है? ए कितने वोट से हारा? फाइनली 600 वोट से हारा। लेकिन अगर ये सारे वोटर्स वोट करते तो ए कितने वोट से जीतता? 1200 वोट से जीतता। यस और नो? इफ दिस प्रोसेस डिड नॉट हैपन तो ये 1200 वोट से जीता। यस, ठीक है। तो अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पार्टी ए लॉस्ट बाय अ मेजोरिटी विच वाज हाफ विच वॉज हाफ ऑफ दैट बाय विच इट कुड हैव वन। तो वो 1200 वोट की मेजोरिटी से जीत सकता था, लेकिन उसकी हाफ की मेजोरिटी से हार गया। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है इस ऑप्शन से। येस और नो? ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? इट वोंट टेक मोर टाइम। कितना टाइम लगेगा बताओ? इफ यू वांट मी टू सॉल्व दिया है ना, इफ यू वांट मी टू सॉल्व, ठीक है। अगर आप चाहते हो बस मैं ऑप्शन चेक करूँ, तो फॉर मी इट्स लाइक अ सेकेंड जॉब। कितने सेकंड्स की जॉब है ये बताओ मेरे लिए? आई कैन चेक ऑल दी ऑप्शन विद इन सेकेंड्स, ठीक है। कैसे? मान लो ऑप्शन बी चेक करना है। 600 300, ठीक है। 600 300, 900 300, दैट्स इट। हो गया चेक। इट मीन्स, हैड द इलेक्शन बीन फेयर, इट मीन्स कि ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये सब जो प्रोसेस हुआ है, किडनैपिंग हुआ, ये इन्फ्लुएंस किया गया, अगर ये नहीं हुआ होता तो ये होता, ठीक है। अगर किडनैपिंग नहीं होता, इन्फ्लुएंस नहीं होता तो ये होता। तो वो कितने वोट से जीता? इनिशियली कितने वोट्स आ रहे हैं बताओ? टेल मी गाइस, क्या हो गया तुम लोग को? ज़्यादा लंबी मैराथन चल गई है क्या? इनिशियली कितने वोट्स है बताओ? ए हैड 1800 वोट्स एंड बी वी गॉट 600 वोट्स। यस। अब इनिशियली अगर कुछ भी यहाँ पे स्यापे नहीं होते, किडनैपिंग नहीं होती, इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो ए कितने वोट से जीतता बताओ? 1200 वोट से जीतता। लेकिन किडनैपिंग हुई, उसके बाद कुछ इन्फ्लुएंस करके चले गए, तो फाइनली ए के पास 600 वोट बचे और बी के पास नौ, कितने हो गए? 1200 हो गए। तो कितने वोट से हार गया? 600 वोट से हार गया। तो अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पार्टी ए लॉस्ट बाय मेजोरिटी, पार्टी ए, ठीक है, लॉस्ट बाय मेजोरिटी विच वॉज हाफ, दिस मेजोरिटी जिससे वो हारा है, विच वॉज हाफ ऑफ दैट बाय विच इट वुड हैव वन हैड द इलेक्शन बीन फेयर। अगर इलेक्शन फेयर हुआ था तो वो 1200 से जीतता, लेकिन अब उसके हाफ से हार गया क्योंकि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। एज सिंपल एज दैट, देयर इज नथिंग कंफ्यूजिंग इन द स्टेटमेंट। यस, कुड एवरीबडी फॉलो? अमन, उसके वोट्स डबल हो गए ना। देखो यार, तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो, है ना। तुम लोग के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में इतना इतना प्रॉब्लम क्यों होती है तुम लोग को, है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं। पार्टी बी वॉज ऑल्सो एबल टू इन्फ्लुएंस सम ऑफ द रिमेनिंग पार्टी ए वोटर्स, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने।
एंड डज डबल द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वोट्स। तो पार्टी बी की स्ट्रेंथ डबल हो गई ना। तो अगर अभी 1200 वोट्स हैं तो इसके पहले वाले स्टेप पे उसके पास कितने वोटर्स रहे होंगे? 600 वोटर्स रहे होंगे। मतलब 600 वोटर यहाँ से आए होंगे तभी उसकी स्ट्रेंथ डबल हो गई ना। राइट अमन? कुड यू फॉलो? कुड एवरीबडी फॉलो दिस? यस। सो इट्स द बेस्ट वे। ठीक है, जब भी आपके पास इलेक्शन का क्वेश्चन आएगा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन यूज ऑप्शंस। ठीक है, ये जब भी इलेक्शन वाला क्वेश्चन आता है हमेशा ऑप्शन इज प्रेफर्ड। अगर मेरे पास ऑप्शन रहते हैं मैं हमेशा ऑप्शन यूज करता हूँ। दैट इज द इजिएस्ट वे टू सॉल्व, रादर देन मेकिंग, रादर देन डूइंग कि यहाँ पे अगर एक्स वोटर्स ए में थे, ठीक है, 2400 माइनस एक्स यहाँ पे थे, फिर उसका 2/3 निकाला, है ना, फिर वहाँ पे 2400 माइनस एक्स का डबल किया, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर उसको इक्वेट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी लेंदी। ठीक है, चल। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन चेक करना इज ऑलवेज बेटर। ना प्लीज ट्राई दिस ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन मैंने बैच में कराया हुआ है, बैच में मैंने कराया हुआ है, बट बाकी लोग को भी करा देता हूँ। ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं आता होगा लोगों को। Many of you might not know this concept. हाँ, तुम लोग डायरेक्टर बन जाओ, ठीक है। कॉग्स क्या होता है? कॉग्स गूगल करो, जस्ट गूगल इट। कॉग्स वो होते हैं, टीथ होते हैं ना उसमें, जो साइकिल, जो गियर वाली साइकिल होती है ना, जो टीथ होते हैं उसको कॉग्स कहते हैं। यस। हाँ। गियर प्रिंसिपल पढ़ा है आप लोगों ने? हैव यू गाइस डन द गियर प्रिंसिपल? ओके, रिमेंबर दिस, लेसर द नंबर ऑफ कॉग्स मोर द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, मैंने भी नहीं चलाई यार गियर वाली साइकिल, नसीब में नहीं हुई। कॉमर्स वाला हूँ, अच्छा। चलो ठीक है, मैंने बता दिया, लेसर द नंबर ऑफ कॉग्स मोर द नंबर ऑफ टर्न्स। जितने कम कॉग्स होंगे उतने टर्न्स होंगे, ठीक है। अरे लेस कॉग्स गूगल करो ना, जस्ट गूगल कॉग्स, यू विल नो व्हाट अ कॉग इज। मेरे टाइम में एवन एल्टन आती थी, एवन एल्टन साइकिल थी मेरी। चलो ठीक है, डन। 48। ओके, इज एवरीबडी गेटिंग 48? ऑलराइट, लेट्स सी हियर, ठीक है, डिस्कस करते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। टू कॉग्ड व्हील्स वर्किंग टू ईच अदर हैव 48 कॉग्स एंड 72 कॉग्स, ठीक है। तो एक में 48 कॉग्स हैं, एक में 72 कॉग्स हैं, राइट ना। इट सेज इफ द लेटर टर्न्स 120 टाइम्स इन 3/4 ऑफ अ मिनट, ठीक है। तो टाइम एंड टर्न्स, क्या कह रहे हो तुम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है। अरे कॉग डालो वहां पे, ठीक है, गियर, कॉग गियर ऐसे करके डालो,
ऐसे तो तुम लोग क्वेश्चन जाके एआई कर लेते हो, चैट जीपीटी कर लेते हो, है ना? अब वहाँ पे तुम्हें चैट जीपीटी नहीं कर पा रहे हो, राइट? कॉक गियर्स डालो, तुम्हें समझ में आ जाएगा किसकी बात हो रही है, ठीक है? चलो डिस्कस कर लें। गूगल करना भी सिखा दो। और कुछ? एनीथिंग एल्स? अरे वो टीथ होते ना जिसमें, वही होता है यार। चलो ठीक है। हाँ सही बात है। नाउ लिसन केयरफुली गाइस प्लीज, बहुत बातें हो गई है ना। समझो ध्यान से, अभी सिखा रहा हूँ ना गरिमा, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर, प्लीज लिसन केयरफुली नाउ, ठीक है? लेस कॉक्स इज इक्वल टू मोर नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है? तो अब जैसे कॉक्स 48 है, 72 है ना? अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द लेटर टर्न्स 120 टाइम्स इन 3/4 ऑफ अ मिनट, ठीक है? तो 120 टाइम्स ये टर्न करता है इन 3/4 ऑफ अ मिनट, तो 3/4 ऑफ अ मिनट का मतलब क्या हो गया? 45 सेकेंड्स में। यस, ऑल ऑफ यू एग्री, ठीक है? तो अब मुझे निकालना है कि हाउ ऑफन डज द फॉर्मर टर्न इन 12 मिनट्स, तो 12 सेकेंड्स में ये कितना टर्न करेगा, ठीक है? ये मुझे फाइंड करना है, राइट? अच्छा अब ध्यान से सुनो गाइस, पहले 120 टर्न्स हैं, ठीक है? अब बातें बंद कर दो, ठीक है? प्लीज स्टॉप टॉकिंग एंड लिसन केयरफुली। 120 टर्न्स है पहले, है ना? अब मुझे यहाँ का टर्न निकालना है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ जाने पे मेरा टाइम रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? पहले 45 सेकेंड टर्न हो रहा था, अब 12 सेकेंड टर्न हो रहा है, राइट? तो अगर टाइम रिड्यूस हो गया तो मेरे नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो जाएंगे। अगर कम कम टाइम के लिए व्हील रोटेट कर रहा है तो टर्न्स भी कम हो जाएंगे, राइट? तो कहने से माई मल्टीप्लाइंग फैक्टर शुड बी लोअर वैल्यू अपॉन हायर वैल्यू। यस और नो? क्योंकि अब ये टर्न्स रिड्यूस हो रहे हैं ना, right? So if the terms are getting reduced, then my multiplying factor should be lower value upon higher value, ठीक है? अगर मान लो इंक्रीज हो रहे होते टर्म्स तो 45/12 से मल्टीप्लाई करते। ये फंडा आपको पता है कि अगर किसी चीज का इम्पैक्ट ऐसा आ रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है, तो आप बड़ी वैल्यू न्यूमरेटर में रखते हो, छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में रखते हो, राइट? इफ द इम्पैक्ट इज सच दैट द वैल्यू इज डिक्रीजिंग, then you keep the lower value in the numerator and the higher value in the denominator. Yes? Okay. After that, what happens to the cogs here? The cogs are getting decreased, right? So if the cogs are getting decreased, so less cogs means more tons, right? So can I say it means more tons? That means I should take the higher value in the numerator and the lower value in the denominator. That should be my multiplying factor. Yes or no? सत्यजीत ये तुम्हें नहीं बोलना चाहिए यार, मैंने R4 में कितने क्वेश्चन कराए इस टाइप के। वहाँ पे प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें कितनी बार मैंने ये चीज़ बताई है कि अगर इम्पैक्ट ऐसा आ रहा है कि आपको इंक्रीज होना है, फॉल्टी वेट में ही बताया है, ठीक है? कि द प्राइसेस वट एवर द क्वान्टिटी इज इन कंसिडरेशन, अगर वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है? तो यू कीप द लोअर वैल्यू इन द न्यूमरेटर एंड दिस लार्जर वैल्यू इन द डिनोमिनेटर, ठीक है? अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट, देन यू कीप द, if the value is increasing, then you keep the higher value in the numerator, lower value in the denominator. प्लीज रिपीट। आपको टर्न्स निकालने हैं, इस वाले केस में 120 टर्न्स हैं तो 120 लिख लो, ठीक है? उसके बाद, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद टाइम मेरा कम हो रहा है, 45 से 12 हो गया, तो टाइम का इम्पैक्ट क्या आएगा टर्न्स पे? टाइम का इम्पैक्ट टर्न्स पे ये आएगा ना कि इफ टाइम इज डिक्रीजिंग देन द टर्न्स विल आल्सो डिक्रीज, राइट? टाइम इन टर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इजंट इट? ठीक है, तो इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इफ टाइम इज डिक्रीजिंग देन द टर्न्स विल आल्सो डिक्रीज, सो 12/45। yes, right? Cogs and tons, ठीक है? Cog is directly inversely proportional to the tons. So if cog is becoming 72/48, then the tons will become, sorry, if the cog is becoming 48/72, then the tons will become 72/48. ठीक है ना? Could everybody follow? अरे वही लॉजिक है, वही फंडा है। जैसे होता है ना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, राइट? होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब मान लो मेरा प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है? लेट्स से माय प्राइस इज कांस्टेंट and I tell you that expenditure increases by 20% and consumption decreases by 25%. ठीक है, what is the change in price? Not constant. If I ask you the change in price here,
लेट्स से इफ आई आस्क यू व्हाट इज द चेंज इन प्राइस, तो आप बोलोगे न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस into expenditure is increasing by 20%, that means it is becoming 6 by 5 times. What is the impact of expenditure on price? If your expenditure will increase, your price will also increase. Yes or no? If the expense is increasing, then the price is also increasing. They are directly proportional to each other, right? So you'll multiply 6 by 5 as it is. Remember this. If your consumption is decreasing, so your price will also decrease. Yes? So if this is becoming 1 by 4, if your consumption is decreasing, then what will happen to the expense? 4 by 3. बस सही वही सेम फंडा है, राइट, सेम फंडा, ठीक है. कंफर्टेबल, आई होप आई हैव डन करेक्ट ना, मैंने जल्दी में गलत तो नहीं बता दिया. न्यू प्राइस इक्वल टू ओल्ड प्राइस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो यू विल कीप द सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है. दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, सो यू विल कीप द ऑपोजिट मल्टीप्लाइंग फैक्टर. हाँ ठीक है, करेक्ट. कुड एवरीबडी फॉलो? अब यहाँ पे टर्न्स पे आ गया, सो न्यू टर्न्स, ठीक है, दे हियर यू से न्यू टर्न्स is equal to old number of turns, that is 120, and then you see the impact of each of these on the turns. अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर रख दो, इनवर्स है तो रिवर्स कर दो, ठीक है. इज दिस फंडा क्लियर ऑफ कॉग्स एंड टर्न्स? हैवंट यू गाइज डन दोस क्वेश्चंस? आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं किए क्या कि इफ 10 वीवर्स कैन वीव 10 चेयर्स इन 20 days, टाइम इन वर्क वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस किए होंगे ना इस मेथड से यार, डायरेक्ट मैन आवर डे से किए हैं सारे. One of the ways is doing using man hour days wala concept. One of the way is doing using this multiplying factor वाला concept. नहीं किए हैं? अच्छा ठीक है, चलो मैं वर्कशॉप में करा दूंगा. आई टेक इट अप इन मैराथन, ठीक है, नेक्स्ट मैराथन में मैं ले लूँगा. क्या नहीं समझ में आ रहा बाबा, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है गरिमा. कॉग नहीं किया, अब तो मैंने बता दिया. कॉग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, एज सिंपल एज दैट. अगर कॉग आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो टर्न्स इंक्रीज करेंगे, अगर कॉग आपके इंक्रीज करे तो टर्न्स डिक्रीज करेंगे, एज सिंपल एज दैट. गेयर में जितने ज़्यादा टीथ होंगे उतने कम टर्न होगा, राइट. अगर कम टीथ होंगे तो ज़्यादा टर्न्स होंगे. एक सिचुएशन है कि 120 टर्न्स है. 120 टर्न्स कब हो रहे हैं? जब 45 सेकेंड घूमता है, ठीक है. और कितने कॉग्स हैं? 48 कॉग्स हैं. कितने थे? 72 थे, 48 थे. फोर्टी एट थे, ठीक है. 72 थे, राइट, ठीक है, 72 थे, राइट. सो 72 कॉग्स थे, अब 48 कॉग्स हो गए. तो अगर आपके कॉग्स डिक्रीज हो गए गरिमा, कॉग्स यहाँ पे क्या हुए? डिक्रीज हुए ना. ये वाली सिचुएशन कब थी? जब 72 कॉग्स थे. तो अब 48 कॉग्स पे कितने टर्न्स आएंगे? तो आप बोलोगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इंटू 72/48 कर दोगे. यस. टाइम पहले 45 सेकेंड था, 12 सेकेंड हो गया, तो अब टाइम डिक्रीज हो गया. अब टाइम डिक्रीज हो गया तो कम टाइम के लिए वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, कम टाइम के लिए रोटेट कर रहा है तो कम टर्न्स आएंगे वापस से. तो यहाँ पे 12/45 कर दो, क्योंकि कम करना है इसको, टर्न्स को हमें. ये टाइम की वजह से टर्न्स कम होने, तो यहाँ पे 12/45. ये लेसर करेगा ना ये फ्रैक्शन, और कॉक्स की वजह से आपको इंक्रीज करना है टर्न्स को, तो ये वैल्यू बढ़ाएगा फ्रैक्शन आपकी. सिंपल सा फंडा है, लेस कॉग इज इक्वल टू मोर टर्न्स, दैट इज इट. इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. कंफर्टेबल एवरीबडी? कुड एवरीबडी फॉलो? यस. कैन आई प्रोसीड ahead to the next one? Please try this. Yes, राशि, अगर 50 सेकेंड दिया होता तो इट वुड हैव बीन 50/45. परफेक्ट. आप लोग ने वो वेटेड वाले क्वेश्चंस किए ना, फॉल्टी वेट वाले क्वेश्चंस. यू गाइस हैव डन फॉल्टी वेट्स, राइट? उसमें भी तो वही होता था ना कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर वैसे ही लिखते थे.
अगर कस्टमर को लॉस हो रहा है तो छोटी वैल्यू न्यूमरेटर में, बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में। अगर कस्टमर को प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ी वैल्यू न्यूमरेटर में, छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में। फॉल्टी वेट नहीं पढ़ा है? फॉल्टी वेट इन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ा होगा यार। हाँ, कॉग वाला नहीं किया होगा, एग्री। इट्स अ कंसेप्ट दैट बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। बट इट हैज़ बीन आस्क्ड इन कैट, पहले पढ़ाया गया है, कैट में आ चुका है पहले कॉग, कॉग वाला कंसेप्ट, ठीक है। चलो सब लोग ये ट्राई करेंगे अब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी समझ में आ गया ना? अच्छा, ठीक है। Please try to solve this, all of you. Let's see how many of you can solve this correctly. Roshan is getting 2, 3, and 4. Okay. Anybody else? Anybody else who can give me the answer here? 2, 3, and 4. Alright. Interesting question है ना? हाँ जी, नंबर्स देने थे। अच्छा क्वेश्चन है, राइट? इंटरेस्टिंग, इजी है बट इंटरेस्टिंग है, राइट? चलो लेट्स सी हियर। सम्राट अशोक had 10 chiefs, ठीक है, who each had to pay obligations to him. They were numbered 1 to 10, and the chief with number n had to give him a n gold coins, each weighing 10 grams. ठीक है. So can I say the total weight of coins that Samrat Ashok was supposed to receive was nothing but from 1 to 10 people, each weighing 10 grams, right? So what is the sum of first and natural numbers? What is the sum of first and natural numbers? Can I say 55? All of you agree? So the total weight that he was supposed to receive of the gold coins is 550 grams. All of you agree with me? Yes? Okay. Now further it says the total weight of all the coins received turned out to be 532 grams. So in actual he received only 532 grams. So how much less has he received? How much less has he received? Can I say 18 grams? Yes? Okay. Ashok's minister found that more than two chiefs had missed brass with the gold and reduced the gold weight of each coin by a small amount, that is 20%. Okay. So can I say that 20% of the weight that he was supposed to receive, which has been reduced, right, is equal to 18? Yes or no? Yes, 20% has of the weight that was, reduced is equal to 18, right? So the weight that has been reduced is, can I say 18 into 100 by 20? That is how much? Please tell me. How much is this coming out to be? 90 grams. Yes or no? All of you agree, right? And it tells me here that found that more than two chiefs had missed brass. Okay, so more than two people, that means minimum 3, 4, any of these people have missed 20% impurities. That is why there's a less of 18 grams, right? So can I say
that only 20 plus 30 plus 40 adds up to 90 grams? Yes or no? Only these three numbers can add up to 90 gram, right? Because I need more than two chiefs, right? So can I say chief number 2, chief number 3, and chief number 4? These have done the impurities here, right? So if they have mixed 20% impurity, isn't it? So this person has mixed a 4 gram impurity in this. This person has mixed a 6 gram impurity in it, right? And this person has missed a 8 gram impurity in it. So how much impurity they have missed? These three people, I can say total of 18 gram. That is why this Samrat Ashok received 18 gram less. Could everybody follow? All of them, 2, 3, 4 have mixed here 20% impurity in the actual weight they were supposed to give. This person was supposed to give 2 gold coins of 10 gram. So he cheated and gave only 4 gram less, right? This person was supposed to give 3 gold coins of 10 gram each. So he also mixed a 20% impurity. And same with this person. So this is the only possible answer, that is 2, 3 and 4. राशि यहाँ पे लिखा है ना, more than 2 chiefs. More than 2 people had mixed brass. So when you take 4 and 5, so that is only 2 people. ठीक है? When you say chief number 4 and chief number 5 have mixed an impurity, that is only 2 people, right? But I want more than 2 people. ठीक है ना? So more than 2 people, that means bare minimum 3 people. और यही 3 नंबर है जिनका सम 20, 30, 40 हो सकता है, right? And it was clearly mentioned here that chief number 1 was not involved in it. So you cannot have chief number 1 involved. So you cannot have any other value combination possible. ठीक है ना? Comfortable, everybody? Okay, chalo, let's move ahead to the next one. Please try to solve this, all of you. 90 is the total weight जिसका 20% impurity mix हुआ. वो ये उन लोग का वेट है, ठीक है? जैसे जिस भी चीफ ने चीट किया, ठीक है? समझो, जैसे जिस भी चीफ ने चीट किया, मान लो अगर चीफ नंबर 5 और चीफ नंबर 6 चीट करता, ठीक है ना? अगर चीफ नंबर 5 और चीफ नंबर 6 चीट करता, तो उनको एक्चुअल में कितना वेट देना था गोल्ड कॉइन का? 50 प्लस 60 दैट इज 110. लेकिन वो 20% चीट कर रहे हैं, तो वो कितना कम दे रहे हैं? 22 ग्राम कम दे रहे हैं, राइट? तो 110 में 22 कम कर दो तो कितना देंगे वो लोग? 22 ग्राम लेस मिला. अगर मान लो चीफ 5 और चीफ 6 चीट करते, तो जो सम्राट अशोक था उसको 22 ग्राम वेट लेस मिलता. लेकिन उसको कितना लेस मिला है? 18 ग्राम लेस मिला है. तो मुझे एक ऐसा वेट चाहिए कि जिससे 20% जिसका 18 हो, तो वेट मुझे वो 90 मिला, ठीक है? अब जब वो वेट मुझे 90 मिल गया, तो मुझे ये देखना था कि कौन से ऐसे चीफ हैं जिनके गोल्ड कॉइन्स का सम जो वो देने वाले थे वेट, उनका वेट 90 होना चाहिए. तो वो यही तीन हो सकते हैं, 2, 3, 4, 20, 30, 40. कुड यू फॉलो? एवरीबडी कुड फॉलो दिस? ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि जो ये चीट हुआ है ना, जो कम वेट मिला है, इट इज 20% ऑफ सम वेट, ठीक है? 20% ऑफ सम वेट. और वो वेट क्या है बेसिकली? वो वेट वो है जो चीफ एक्चुअल में देने वाले थे, उसका 20% इम्प्योरिटी है. दिशा, ये तो मैं आपको बैक ट्रैक करके बता रहा था ये, कि अगर मान लो अगर 20 चीफ नंबर 2 जो है, ठीक है? अच्छा बताओ, चीफ नंबर 2 को कितना वेट देना था? कितने गोल्ड कॉइन देने थे? दिशा बताओ. 10 ग्राम के 2 गोल्ड कॉइन देने थे, तो मतलब उसको 20 ग्राम गोल्ड कॉइन देना था. अगर उसने इसमें 20% चीट कर लिया, तो कितना कम दिया बताओ? 20% इज 1/5, मतलब 4 ग्राम लेस किया. तो उसने एक्चुअल में गोल्ड कितना दिया? सिर्फ 16 ग्राम दिया, है ना? ऐसी चीफ नंबर 3 को 10-10 ग्राम के 3 गोल्ड कॉइन देने थे, तो 30 ग्राम देना था, राइट? उसने भी 20% चीट किया, ब्रास मिला दिया, ठीक है? तो कितना दिया उसने? 6 ग्राम लेस दिया. चीफ नंबर 4 को 4 देने थे गोल्ड कॉइन 10-10 ग्राम के, राइट दिशा? इसने भी 20% की चीटिंग कर ली, ब्रास मिला दिया 20%, तो कितना लेस दिया इसने? 20% ऑफ 40 इज 8 ग्राम लेस. तो अगर इन तीनों ने 20% की इम्प्योरिटी करी, मिलाई, ठीक है? तो इन तीनों ने मिला के कितना कम दिया बताओ? कितना कम दिया? 18 ग्राम कम दिया. और क्वेश्चन में यही आ रहा था, क्वेश्चन के हिसाब से 18 ग्राम ही कम मिल रहा था.
मतलब यही 3 चीफ है जिन्होंने चीटिंग करी है। ठीक है, सिंपल है यार, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुड एवरीबडी फॉलो? यस। चलो नाउ प्लीज ट्राई दिस। 18 ग्राम गोल्ड कम नहीं है यार। हाँ कह सकते हो, कह सकते हो कि 90 मिलना था लेकिन उसमें 18 कम मिला। तो अगर 90 मिलता पूरा, तो ओवरऑल वो 550 पहुंच जाता, जो अशोक को मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 18 कम मिला 90 में से, तो वो 532 पे ही रह गया, क्योंकि इन तीनों चीफ ने चीटिंग कर ली, 2 3 4 ने। चाहे इंडिविजुअल लो चाहे मिला के लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली वो 20% की चीटिंग हो रही है ना। चलो ये ट्राई करेंगे सब लोग। ऑल ऑफ यू विल ट्राई दिस नाउ। काफ़ी लंबी वर्कशॉप हो गई यार आज है। 20। ओके, एनीबडी एल्स हु कैन गिव मी द आंसर? I'm very happy that you guys are liking the questions here. Good, good. काफ़ी मेहनत करी है मैंने इन क्वेश्चंस के पीछे, सो थैंक यू दैट यू गाइज लाइक द क्वेश्चंस। कुछ इजी भी रखे मैंने, कुछ मॉडरेट रखे, कुछ ट्रिकी रखे हैं। आई हैव केप्ट इट एज अ मिक्स बैग, थोड़ा मिक्स बैग बनाया था मैंने। इशिका इज गेटिंग 22। ओके। नहीं यार 10 बजे तक नहीं है। आई एक्चुअली देयर वाज अनदर सेशन प्लान एट वाई टी, ठीक है, तो मुझे रैप अप जल्दी करना था, तो मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन निकाले थे। बट ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, जल्दी ख़त्म कर लेंगे। वील फिनिश द क्लास प्रिटी सून। ठीक है, काफ़ी पढ़ लिया यार, कोई बात नहीं, अभी और मैराथन्स करेंगे आगे। नहीं 8 नहीं बचे हैं, कुछ क्वेश्चन ना मिसिंग है। एक्चुअली अभी मैं ब्रेक में देख रहा था, तो कुछ क्वेश्चन टाइपिस्ट ने टाइप ही नहीं किए, तो अभी 26 तक हैं। वी हैव इट टिल 26। चलो डिस्कस करें, व्हाट इज द आंसर दैट यू गाइस आर गेटिंग? बस 4 मोर। 22। चलो ठीक है, देखते हैं। It says here at a premier B school in a batch of 160 students, 75% student did not have any prior work ex। ठीक है, तो 160 में से 3/4 का कोई प्रायर वर्क एक्स नहीं था, तो व्हाट इज 3/4 ऑफ 160? कैसे 120? ठीक है ना, तो इन 120 लोगों का कोई भी प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, तो कैसे 40 लोगों का वर्क एक्सपीरियंस था? यस और नो, 40 पीपल हैड अ वर्क एक्सपीरियंस? ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? यस और नो? ठीक है, अब फर्दर क्या कह रहा है, आउट ऑफ द स्टूडेंट हु हैड प्रायर वर्क एक्सपीरियंस 80% आर इंजीनियर्स। ठीक है, तो इसमें 80% इंजीनियर्स हैं, राइट? सो हाउ मेनी इंजीनियर्स इन दिस? कैसे 32 इंजीनियर्स? यस। Further it says the number of percentage of number of commerce graduate as a percentage of number of students in this batch who are not engineers is 50। ठीक है, अच्छा who are not engineers, ओके। तो ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ इंजीनियर्स एक्स है, इफ आई से द नंबर ऑफ इंजीनियर्स इज एक्स, राइट,
who do not have a work experience, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. तो बताओ टोटल इंजीनियर्स कितने हो गए. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स. जिन इंजीनियर्स के पास वर्क एक्स नहीं, मान लो वो एक्स हैं, तो टोटल इंजीनियर्स कितने हो गए. कैन आई से 32 प्लस एक्स. यस, ऑल ऑफ यू एग्री विद मी. तो बताओ नॉन इंजीनियर्स कितने हो गए. व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन इंजीनियर्स हियर. कैसे 160 माइनस 32 प्लस एक्स, राइट. दैट इज सेम एज 128 minus x. All of you agree? Is everybody comfortable till here? ठीक है. अब यहाँ पे क्या कह रहा है. द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट as a percentage of the number of students in the batch who are not engineers 50. So can I say 128 minus x इसका 50% are commerce graduate? Can I conclude that? Yes or no? Can I conclude that? Because the it says the percentage of number of commerce graduate as a percentage of number of students in this batch who are not engineers is 50. So this value who are not engineers, right? Commerce graduate as a percentage of this is 50. So can I say half of this is commerce graduate? Yes, all of you agree. Now it says if the number of engineers is greater than the number of commerce graduate. So I just keep on applying what is being written in the statement. Okay. So now the question is telling me that the number of engineer is greater than number of commerce graduate. So we know that total engineers are 32 plus x, and this has to be greater than the commerce grad. So 128 minus x by 2, right? Then find the minimum possible number of engineers in this batch who do not have prior work experience. ठीक है, देख लेते हैं. So from here I can say that 64 plus x is greater than 128 minus x, right? So from here I can say that, sorry, 2x, my bad. I really need to, be careful with my calculations. Okay, ठीक है. So 2x plus x is 3x is greater than 64. So from here I can say x is greater than 64 by 3. And 64 by 3 is 21 point something. And x was nothing but the number of non-engineers here, right? Engineers who do not have a work experience. And that is what the question is asking me. Find the minimum possible number of engineers in the batch who do not have prior work experience. So since x is greater than 21 point something, so the minimum possible value is, I can say 22. So that should be my required answer. Could everybody follow? Could everybody follow this? Okay. Why? Because it was clearly mentioned that engineers are greater than commerce grad. So I got this inequality. From here I got x is greater than 64 by 3, right? And what was x? X was nothing but number of engineers without work experience. ठीक है ना? Which part, Shripati? Which part do you want me to explain? चलो एक बार I'll give you a recap. ठीक है? Listen carefully. There were 160 people. 75% did not have work experience, right? So this is 120 people. Remaining 40 had work experience. In work experience, 80% were engineers, so 32. Let's say engineers with no work experience is X. So total engineers is 32 plus X, right? So non-engineers will be, I can say 160 minus 32 plus X, that is 128 minus X, right? After that it says, अच्छा, ठीक है, मैं वापस से बता दे रहा हूँ. मन क्या कह रहा है. द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट as a percentage of number of students in the batch who are not engineers. ठीक है. तो number of commerce graduate upon those who are not engineers, that is 128 minus x, is equal to 50%. That is 1 by 2. Yes. यही कह रहे हैं ना. The percentage of number of commerce grad as a percentage of number of students in the batch who are not engineers is 50%, right? So if these are two people, then this is one. That is what it means. Yes or no? 50% का मतलब क्या होता है कि अगर ये दो हैं तो ये वन है. दैट मीन्स हाफ ऑफ इट, राइट? सो ये 128 माइनस एक्स है, तो कॉमर्स ग्रेड कितने होंगे? 128 माइनस एक्स बाई 2. येस और नो? श्रीपति, कुड यू फॉलो? Could everybody follow this?
Please respond, guys. Commerce grad as a percentage of. हाँ, टाइपो हो सकता है. हाँ, यहाँ पे ना नंबर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट एज अ परसेंटेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए. ठीक है. चलो, कैन आई प्रोसीड हेड टू द नेक्स्ट वन नाउ? नेक्स्ट पे चलें. क्वेश्चन नंबर 23. यस. ओके, नाउ प्लीज ट्राई दिस. अरे बिल्कुल यार, मैं ऑलवेज माई बेस्ट विशेज आर विद ईच वन ऑफ यू. डन. हाय दीपक, हाउ आर यू? टेल मी द आंसर. नो प्रॉफिट नो लॉस. Is everybody getting no profit no loss? Yes, all of you are getting no profit no loss. Okay. So now you guys realize that the second half of this session has easier questions. The first half had difficult and tricky questions. The second half has easier versions, right? Slightly on the easier side. Okay. Good, good. Do I need to discuss करना है? ठीक है. This is a very simple straightforward question here. Yes. ठीक है. चलें आगे, नेक्स्ट पे बढ़ें. 20 प्रॉफिट 20 डिस्काउंट. हाँ, सिमिलर. नो प्रॉफिट नो लॉस. यस. ठीक ठीक है. चलो, आई एम मूविंग हेड टू द नेक्स्ट वन देन. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस. 5 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है रौनक. क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. वो जो वहाँ पे स्लोप वाला कंसेप्ट लगता है ना कोऑर्डिनेट का, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. द प्रॉब्लम विद मी इज कि इतने सारे क्वेश्चंस कैसे कराऊँ मैं. हाँ, कैट लेवल इज ऑल सेकेंड हाफ. सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन इज ऑल कैट लेवल. नथिंग डिफिकल्ट. In fact, that hill question is also very good. Uphill, downhill question, the level one, that is also very good question. Mileage one. Yes. Okay, have you guys done this? Yes. कर लेना आराम से. ठीक है. चलो, what is the answer that you guys are getting for this? I hope you guys know this, right? When two objects are in same frame of reference, for example, let's say stream, okay?
then the speed of the stream will become irrelevant. That is, हाँ पोर्टल पे करेंगे TSD वर्कशॉप. That is what I'm trying to say here is, let's say if boat 1 and boat 2, okay, they separate for T hours, right? Let's say they go in opposite direction for T hours, then for them to meet again they'll take exactly T hours, right? So separation time is always equal to meeting time. All of you know this? Yes or no? Do you want me to take an example and explain this? Do you want me to take an example and explain this? Or is this clear? Separation time is always equal to meeting time. That is if two objects have separated for T hours, then for them to meet they'll take again exactly T hours. Yes, everybody knows this, or do you want me to take an example? नहीं पता था, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ. चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल आर्यन, यू आर इन बोट 1, ठीक है, एंड योर फ्रेंड इज इन बोट 2. चलो आर्यन का फ्रेंड कोई ले लेते हैं यहाँ से, पार्टी से फ्रेंड बना देते हैं आर्यन का. चलो रोशन से दोस्ती करा दी आर्यन की, ठीक है. लेट्स से रोशन इज इन बोट 2, ठीक है. अब करेंगे करेंगे कंसेप्ट कैप्सूल, ठीक है. अब लेट्स से आर्यन यू ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन विद फॉर 4 hours, ठीक है, with a speed of let's say 3 meter per second, okay, and let's say Roshan travels in this direction for 4 hours, or let's say for 5 hours with a speed of 2 meter per second, right? So after time same रखते हैं so that I can explain what I'm trying to tell you here. Let's say 4 hours, ठीक है. So 4 hours you go in the left direction and Roshan goes in the right direction, ठीक है. And let's say the stream, the river is flowing in this direction with a speed of 1 meter per second. So can you tell me what is the effective speed of Aryan? Can I say the effective speed of Aryan is 2 meter per second? Yes or no? The effective speed of Aryan will be 2 meter per second. Why? Because river is going in the opposite direction and he's going in this direction with a speed of 3 meter per second. So with a speed of 2 meter per second in 4 hours ले लिया है मैंने, यहाँ पे seconds ले लो, ठीक है, 4 second let's say. So in 4 seconds how much distance will he cover? Can I say exactly 8 meters? Yes or no? Exactly 8 meters, right? And this person, that is Roshan, in 4 seconds with the effective speed of 2 plus 1, that is 3 meter per second, will cover 12 meter distance. Yes or no? So right now Aryan is here and Roshan is here. Is everybody good till here? Could everybody understand this much? ठीक है. अब मान लो दे स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर अगेन, ठीक है. अब ये वापस आना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ. तो इनके बीच का गैप कितना है? इनके बीच का गैप कितना है? 12 प्लस 8, दैट इज 20 मीटर्स, राइट. तो इनको कितना टाइम लगेगा मिलने में? टाइम टेकन विल बी 20 अपॉन द रिलेटिव स्पीड, है ना. अब क्योंकि आर्यन वापस आ रहा है तो आर्यन की इफेक्टिव स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड है, राइट. और रोशन अब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो अब रोशन की इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? कैसे? 4 प्लस 1, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, है ना. सो नाउ दे विल टेक हाउ मेनी आवर्स टू मीट? 4 आवर्स. तो कैन यू ऑब्जर्व हियर कि वो जितने घंटे के लिए सेपरेट हुए थे, ठीक है, जितने घंटे के लिए अलग हुए, है ना, 4 सेकेंड, सॉरी सेकेंड में चल रहा था ना, ठीक है, इट वॉज इन सेकेंड्स, राइट. सो वो जितने सेकेंड्स के लिए सेपरेट हुए उतने ही सेकेंड लगे उनको वापस मिलने में. येस और नो? इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टी टाइम के लिए अलग हो रहे हैं तो उनको वापस मिलने में भी टी टाइम ही लगता है. ऑल ऑफ यू कुड फॉलो? यस, ओके. सो अब यहाँ पे देखो, अच्छा, कहना से कि वो, अच्छा यहाँ पे चेंज क्या होगा? क्या वो सेम पॉइंट पे वापस मिलेंगे जहां से सेपरेट हुए थे? विल दे मीट एट द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर दे सेपरेटेड? नो, ठीक है, वो सेम पॉइंट पे नहीं मिलेंगे. लेकिन दिस, ये जो मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट टू समबडी हु इज स्टैंडिंग ऑन लैंड, ठीक है. जो बाहर रिवर से दूर खड़ा होकर देख रहा है उसके लिए रेलिवेंट है,
ठीक है, फॉर दैट पर्सन इट इज रेलिवेंट कि वो अलग पॉइंट पे मिल रहे हैं, है ना। बट जो बोट में है बंदा, उनके लिए तो इरेलीवेंट है ना, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि वो सेम पॉइंट पे मिले या नहीं मिले, राइट। इफ यू सेपरेट इन अ रिवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड देन यू कम बैक एंड मीट, यू नॉट रियलाइज कि वर यू एट द सेम पॉइंट, बट द अदर पर्सन स्टैंडिंग ऑन द लैंड, उसके पर्सपेक्टिव है वो बता पाएगा कि हाँ यू आर मीटिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इरेलीवेंट इफ यू आर इन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। कुड एवरीबडी फॉलो दिस? यस, ओके। सो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इफ दिस कंसेप्ट इज क्लियर, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोट इज मूविंग इन अ स्ट्रीम, ठीक है। हाँ आर्यन, स्पीड ऑफ रिवर इज इररेलेवेंट, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही लिखा था ना मैंने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बिकम्स इररेलेवेंट, ठीक है। While going downstream it crosses a wooden piece, ठीक है। आफ्टर 1 hour it reaches the port and start traveling in opposite direction, ठीक है। So while going downstream it crosses a wooden piece, after 1 hour it reaches the port, ठीक है। तो wooden piece, जो wooden piece है और जो boat है, वो कितनी देर के लिए सेपरेट हुई है बताओ। For how much time has they separated? कितनी देर के लिए सेपरेट हुआ wooden piece और boat? Can I say for 1 hour? Yes or no? The wooden piece and the boat, they have separated for 1 hour, right? Now, after moving for 1 hour, it crosses the wooden piece again, which is 8 kilometer downstream of the place from where it was encountered earlier. ठीक है। अब अगर 1 घंटे के लिए सेपरेट हुए तो इनको मिलने में भी 1 घंटे लगेगा। तब बस मीटिंग पॉइंट चेंज होता है गरिमा, यस, ठीक है। इफ दिस सेपरेटेड फॉर 1 hour तो इनको मिलने में भी 1 घंटा लगेगा, राइट। तो कहने से ये जो वुडन पीस है, इसने 2 घंटे ट्रैवल कर लिया, yes or no? The wooden piece has traveled for 2 hours. All of you agree with me? 1 घंटा वो तब ट्रैवल किया जब बोट इस डायरेक्शन में जा रही थी, राइट। और जब वापस बोट ने आके उसको पकड़ा तब भी वो 1 घंटा ट्रैवल किया, इजंट इट? सो कैन आई से द वुडन पीस हैज ट्रैवल्ड फॉर 2 hours? और क्या वुडन पीस की कोई अपनी स्पीड है? वुडन पीस तो रिवर की स्पीड से ही जा रहा होगा ना। वुडन स्पीड कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ रिवर। तो 2 घंटे में अगर 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया तो रिवर की स्पीड क्या है? 8/2, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। कुड एवरीबडी फॉलो? सबको समझ में आ गया? सब चीज़ें रिवाइज हो रही हैं आप लोग की? आई होप दिस मैराथन इज हेल्पफुल टू ईच वन ऑफ यू। सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, सारे कंसेप्ट्स, यस। कुछ नया भी सीखने को मिला होगा कुछ लोगों को, फॉर सम पीपल समथिंग न्यू, है ना। अरे बताओ, वुडन रौनक, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें बात बताओ, वुडन पीस, ठीक है, वुडन पीस अगेंस्ट द रिवर कैसे जाएगा बताओ मुझे एक बार। उसकी कोई अपनी स्पीड होती है क्या? रिवर इधर फ्लो कर रही है, वुडन पीस इधर जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? हैं? वुडन पीस जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो रिवर के साथ ही जाएगा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलें। शैल आई मूव टू द नेक्स्ट वन? चलो प्लीज ट्राई दिस। ये भी क्वेश्चन मैंने जिस बैच में कौन पढ़ाया उसमें तो मैंने कराया है ये, ठीक है। जिस जिस बैच में मैंने कौन पढ़ाया उस बैच में मैंने ये क्वेश्चन कराया है, बाकी लोगों के लिए नया होगा। ये मैंने वर्कशॉप में कराया हुआ है, बट फॉर अदर्स इट विल बी अ न्यू क्वेश्चन, सो प्लीज ट्राई दिस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन, ये कैट में आया है बहुत बार। नहीं है, ऐसा नहीं है गरिमा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देता हूँ एक आध, है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैट में आ चुका है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत हैं, देर आर एंडलेस क्वेश्चंस, इट्स जस्ट दैट कि टाइम की कमी है, ओनली द लैक ऑफ टाइम। वो मेरी पीडीएफ नहीं है प्रभु, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने ना चेक करा उसमें क्या है।
आई डेंट इवन चेक कि उसमें क्या है वहाँ पे. चलो, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस एवरीबडी. थैंक यू अर्षिता, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट. डन. ऑलराइट. एनी आइडिया हाउ टू गो अबाउट दिस अदर्स जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है? ठीक है. दोज हैव नॉट स्टडी, डू यू नो हाउ टू गो अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इसका प्रॉपर वे तरीका का करने का. ठीक है. देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग दिस. जिसको वो आता है वो अच्छे से कर सकता है. ठीक है. आई टेल यू द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस, है ना. देखो ध्यान से सुनो. ठीक है. A hound was chasing a fox. Whenever the hound took 4 leaves, the fox took 5. ठीक है. राइट. नो आइडिया. ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, है ना. डिस्टेंस वाइज और टाइम वाइज. ठीक है. वील कंपेयर. राइट. सो डिस्टेंस वाइज क्या हो रहा है? इफ 3 hound leaves cover the same distance as 4 fox leaves. ठीक है. तो 3 hound leaves cover the same distance as 4 fox leaves. Right. And it says whenever the hound took 4 leaves, the fox took 5. ठीक है. तो जब भी hound 4 leaves लेगा उतने टाइम में fox जो है वो 5 leaves ले लेता है. येस और नो. ठीक है. तो दो यहाँ पे आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीज़ें दी होंगी. एक डिस्टेंस वाइज, एक टाइम वाइज. तो डिस्टेंस वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 hound leaf covers the same distance as 4 fox leaves, है ना. और टाइम वाइज यहाँ पे दिया हुआ है whenever the hound took 4 leaves, the fox took 5. इज एवरीबडी कंफर्टेबल टिल हियर? यहाँ तो सबको समझ में आया? कुड एवरीबडी फॉलो टिल हियर? यस. ऑलराइट. अब इसके बाद क्या करते हैं? द सेकेंड स्टेप इज टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 4. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 4? इज 12. राइट. सो इफ 3 hound leaves, ठीक है, इसको 12 मीटर मान लो. इफ 3 hound leaves कवर्स 12 मीटर, तो 1 hound leaf कितना डिस्टेंस कवर करेगा? कैन आई से 4 meters? येस और नो? 1 hound leaf विल कवर एग्जैक्टली 4 मीटर. ठीक है. सिमिलरली अगर 4 fox leaves 12 मीटर कवर करता है, तो 1 fox leaf कितना मीटर कवर करेगा? एग्जैक्टली 3 meters. ठीक है. तो दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ सॉल्विंग. सेकेंड स्टेप क्या है? डिस्टेंस वाइज वॉट एवर वैल्यू हैज बीन गिवन, टेक द एलसीएम ऑफ इट एंड फाइंड 1 hound leaf equivalent distance and 1 fox leaf equivalent distance. ठीक है. Then it says the fox head start was equal to 90 hound leaves. Okay, so fox is ahead of the hound by 90 hound leaves. Okay, now can I say 1 hound leaf is equivalent to 4 meter? So 90 hound leaves is equivalent to 90 into 4, that is 360 meters. Yes or no? So the fox is ahead of the hound by 360 meters. Yes or no? All of you agree? Could everybody follow? Right? Now, if you look at this value here, so when the hound takes 4 leaves, in the same time the fox is taking 5 leaves. So 1 leaf it covers 4 meter. So in 4 leaves it will cover 4 into 4, that is 16 meters. Right? So that is the speed of the hound here. Let's say 16 meter per second. Similarly, the fox cover 3 meter in 5 leaves in 1 leaf, right? So in 5 leaves, the fox will cover 5 into 3 meter. That is 15 meter per second is the speed of the fox. Is everybody good till here?
कुड एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस मच, दैट अगर एक फॉक्स स्लीप में 3 मीटर कवर होता है तो 5 स्लीप में 5 into 3 दैट इज 15 मीटर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से मैंने मान लिया कि 1 सेकंड में ये 4 लीप ले रहा है, ये 5 लीप ले रहा है, तो इन 1 सेकेंड द स्पीड ऑफ हाउंड इज 16 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ फॉक्स इज 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 360 मीटर है। सो टाइम टेकन बाय देम टू मीट, ठीक है, time to meet is equal to nothing but 360 meter, that is the distance upon their relative speed, and since both of them are moving the same direction, so relative speed is 16 minus 15, तो यहाँ से कितना सेकेंड्स आ गया, 360 सेकेंड्स, है ना। अब क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी लीव्स डिड द हाउंड नीड टू कैच द फॉक्स, ठीक है। अब पहले तो मुझे पता करना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया हाउंड ने। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय हाउंड इज नथिंग बट, अगर हाउंड की स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड, सो इन 360 सेकेंड्स हाउंड विल कवर 16 into 360 मीटर ऑफ डिस्टेंस, यस। और अब मुझे इसको लीप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई वॉन्ट द आंसर इन हाउ मेनी लीप्स, राइट। तो अगर मुझे लीप में आंसर चाहिए तो मुझे पता है एक हाउंड लीप 4 मीटर की होती है, तो अगर इतना मीटर डिस्टेंस कवर किया है, सो टू कन्वर्ट दिस इनटू हाउंड लीव्स आई नीड टू डिवाइड दिस बाय 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 4 16, राइट। आई गेट नथिंग बट 0, 6 4 24 एंड 1440 हाउंड लीव्स। कुड एवरीबडी फॉलो, या मुझे कोई पार्ट रिपीट करना है, बताओ। इज एवरीबडी कंफर्टेबल? डू यू वांट मी टू रिपीट एनी ऑफ द पार्ट हियर? रिकैप दे दूं? ठीक है, ठीक है, लिसन केयरफुली गाइस, है ना, वापस एक आई एम गिविंग अ रिकैप। टाइम इनटू डिस्टेंस, देखो सिंपल सा फंडा है दैट डिस्टेंस वाइज जब हाउंड 3 हाउंड लीप लेता है उतना ही डिस्टेंस में 4 फॉक्स लीप होता है, ठीक है। द हाउंड कवर्स 3 हाउंड लीप कवर्स द सेम डिस्टेंस, है ना, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो मैं एलसीएम ले सकता हूँ दोनों का, ठीक है। कैन आई टेक द एलसीएम? सो एलसीएम इज 12 मीटर, एलसीएम 12 आ गया, तो एक हाउंड लीप में 4 मीटर हो रहा है और एक फॉक्स लीप में 3 मीटर हो रहा है, ठीक है। तभी ये 3 हाउंड लीप और 4 फॉक्स लीप का डिस्टेंस सेम कवर होगा, राइट। उसके बाद क्या किया, टाइम वाइज मुझे दिया होता है जितने टाइम में हाउंड 4 लीप लेता है उतने टाइम में फॉक्स 5 लीप ले लेता है। तो अगर एक हाउंड लीप 4 मीटर डिस्टेंस कवर करती है तो 4 हाउंड लीप कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, 16 मीटर, है ना। तो 16 मीटर पर सेकेंड मान लो, ठीक है, टेक इट एज सम यूनिट, कोई भी यूनिट मान सकते हो। सिमिलरली उतने टाइम में फॉक्स कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 लीप में 5 into 3 दैट इज 15 मीटर, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब फॉक्स जो है वो हाउंड से 90 हाउंड लीप आगे था, हाउंड लीप आगे था, तो मीटर के टर्म में कितना आगे था, एक हाउंड लीप 4 मीटर की है, तो मतलब वो 360 मीटर आगे था, 360 मीटर्स ही वॉज एहेड ऑफ द हाउंड, राइट। अच्छा, 360 मीटर अगर उसको कवर करना है तो दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड लेंगे, इसकी स्पीड 16 है, इसकी स्पीड 15 है, तो 16 - 15 लेंगे, तो 360 सेकेंड में कवर कर लेगा। तो 360 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा हाउंड, आई कैन से 16 की स्पीड से 16 into 360, लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए, हाउंड लीप में चाहिए, तो एक लीप 4 मीटर की होती है, अगर इतना डिस्टेंस है मीटर्स में तो अगर इसको लीप में कन्वर्ट करना है तो 4 से डिवाइड कर दो, सो आंसर इज 1440 हाउंड लीप्स। कुड एवरीबडी फॉलो? सबको समझ में आ गया? यस, कैन आई प्रोसीड अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू, शैल आई प्रोसीड अहेड टू द लास्ट वन? चलो, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। नहीं यार शुभम, मैं बहुत थक गया हूँ, आई हैव टू गो ऑल्सो समवेयर। बस ये लास्ट क्वेश्चन है यार, और क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, अब खत्म हो गए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है।
खत्म हो गए क्वेश्चन। चलो ठीक है, प्लीज ट्राई दिस। एक तो वाईटी में पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कि हैव टू स्पीक रियली लाउड। यहाँ पे ना वॉइस नहीं आता सही से। वायरलेस माइक कौन सा यूज़ करूँ? पता नहीं, ट्राई करूँगा एक दिन में डिफरेंट डिफरेंट माइक्स। नहीं यार, आज नहीं प्लीज़ शुभम यार, आज मत करो, कल कर लेना, अभी मत करना मतलब। अच्छा, चलो देखता हूँ, मैं लेता हूँ फिर, है ना। अगर इतना लाउड नहीं बोलना पड़े ना, तो आराम से 8 घंटे पढ़ा दूँ। बहुत लाउड बोलना पड़ रहा है मुझे, तो लाउड बोलने की वजह से गला एकदम बैठ चुका है अब। ठीक है, देखता हूँ, मैं रोड का देखता हूँ, वट एवर यूर सेइंग आई चेक वंस। हाँ जी, एनी बडी यू कैन गिव मी द आंसर। 16? क्या 1.2 लाख का आता है? 20 मिनट्स? ओके, एनीबडी एल्स? गरिमा इज सेइंग 24। गरिमा कैसे सॉल्व किया? गरिमा कैसे सॉल्व किया आपने? बस लास्ट क्वेश्चन है आकांक्षा। 25 कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने? 24 25 जिन लोग का आ रहा है, टेल मी द अप्रोच यूज्ड। दिमाग ही नहीं चल रहा। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। अ बॉय इज वॉकिंग along the direction of two parallel tracks, ठीक है। On one of these tracks, the trains are going on one direction at equal intervals. On the other track, the trains are going in opposite direction at same equal intervals, ठीक है। तो अगर बॉय की स्पीड m है, ठीक है ना, अगर बॉय की स्पीड m है, तो एट डायरेक्शन में उसकी इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी m प्लस टी, और एट डायरेक्शन में उसकी इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी m माइनस टी। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? यस और नो? ठीक है ना।
अगर बॉय अगर रेलवे ट्रैक के अलॉन्ग वॉक कर रहा है एम स्पीड से, तो 8 डायरेक्शन से ट्रेन उसके सेम सेम डायरेक्शन में जा रही होगी जिस डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा है एक रेलवे ट्रैक पे। तो उसकी इफेक्टिव स्पीड एम माइनस टी हो गई। एक वाले रेलवे ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही होगी तो वहां पे उसकी इफेक्टिव स्पीड एम प्लस टी हो गई, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन वन डायरेक्शन अ ट्रेन क्रॉसेस द बॉय एवरी 20 मिनट्स, एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द ट्रेन क्रॉसेस द बॉय एवरी 30 मिनट्स। तो कैसे 20 मिनट वाला जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला होगा। यस, यस और नो, 20 मिनट वाला ऑपोजिट डायरेक्शन वाला होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे जल्दी ट्रेन क्रॉस करेगी, क्योंकि वो ट्रेन की तरफ मूव कर रहा है। राइट, ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, ठीक है ना। और 30 मिनट्स वाला सेम डायरेक्शन वाला होगा, है ना। अब वापस से वही फंडा आ गया, ए एम एच एम वाला। अगर आपकी स्पीड ए पी में है तो टाइम क्या होता है, वो एच पी में होता है ना। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 20 × 30/20 + 30, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। कितना आ जाएगा ये। सो बहुत लोग ये क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं फालतू का, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। सो 24 मिनट्स, सो एवरी 24 मिनट्स द ट्रेन विल क्रॉस इफ द मैन स्टैंड स्टिल, ठीक है ना। कुड एवरीबडी फॉलो, सबको समझ में आ गया। यस, हाँ काफ़ी सिंपल है। ठीक है, सबको अच्छा लगा सेशन, डिड यू गाइज एंजॉय द सेशन। अरे लॉन्ग मेथड मत करो यार, लॉन्ग मेथड मत करो, विषय बहुत लेंदी हो जाता है वो। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में भी मिलेंगे, है ना। वील डू अ सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे ऐसे अच्छे अच्छे, आई गेट सम मोर क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वाले में थोड़ा एस आई सी आई पे लेके आऊँगा मैं, ठीक है। आई गेट क्वेश्चंस ऑन एस आई सी आई, ठीक है। आर एट की नेक्स्ट क्लास वेरी सून यार, वेरी सून आई टेक अ बैच, आई टेक अ सेशन, ठीक है। हाँ मैं पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ लूँगा लूँगा, एल आर डी सेशन भी लूँगा, ठीक है। थैंक यू दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, चलो हैव फन। आई होप योर डे वाज प्रोडक्टिव, थैंक यू सो मच गाइस। यस, चलो अभी नेक्स्ट क्लास R7 की भी होगी, स्केड्यूल में है ऑलरेडी, है ना, ठीक है। हाँ पोल कर पाते हैं पोर्टल में, राइट। चलो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच।